Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना खोली जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौल। डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी, कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है।
ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. लाहौर के शाह आलम चौक में एक ऐसी मस्जिद वाक़या है जिसे एक रात में तामीर किया गया था। इस मस्जिद के इतनी कलील वक्त में तामीर की वजह और वाक़या भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज है। इस मस्जिद के बारे में इल्लामा इकबाल ने यह शेर मौजू किया था, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तारीख बताती है कि अंग्रेजों के दौर में इस मकाम से एक मुसाफिर का गुजर हुआ और उसने यहाँ नमाज अदा की, जबकि ये इलाका इस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं को ये बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने हंगामा राई शुरू कर दी। मामला जब अदालत तक जा पहुंचा और वहां हिंदुओं का मौक़िफ़ था कि इस जगह पर मंदिर तामीर होगा, जबकि मुसलमान यहां मस्जिद तामीर करना चाहते थे। इस मौका पर मुसलमानों के वकील ने इन्हें तजवीज़ दी कि अगर वो यहाँ सुबह फजर से पहले मस्जिद तामीर कर लेते हैं तो केस का फैसला इनके हक में हो जाएगा। ये सुनना था कि मुसलमानों ने गामा पहलवान की क़यादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फैसला किया और जिस मुसलमान के पास जो सामान था इसने वो मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ तक कि ख़वातीन रात भर अपने सरों पर पानी रख कर लाती रहीं ताकि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने के बाद अदालत ने भी मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया। ये मस्जिद 1917 में तामीर की गई और इसका नाम मस्जिद शब्बर रखा गया। ये मस्जिद 3 मरला के रकबा पर तामीर है। दर्ज बाला कथा तो इस रवायत पर मबनी है जो सीना बसीना चलती आ रही है और ज़बान ज़दे आम है, यानी हर एक ने ज़ेब दास्तान के लिए हस्बे ज़रूरत इसमें इजाफा किया। असल मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। नकूश लाहौर नंबर में इस मस्जिद की तामीर का मामला कुछ इस तरह दर्ज है। इब्तिदा में यहाँ पर एक कच्चा सा चबूतरा था जिस पर लोग नमाज पढ़ा करते थे। इसके करीब ही हिंदुओं का एक मंदिर तामीर हुआ। मुसलमानों को मस्जिद पुख्ता करने का ख्याल आया तो हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम फसाद के पेश नज़र इसकी इजाज़त न दी। मई 1922 में एक रोज पुरजोश नौजवानों ने आपस में मशवरा करके रात रात में यहाँ मस्जिद खड़ी कर दी। वो इशा की नमाज के बाद काम पर लगे और फजर की नमाज के बाद फारिग हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1917 की बात है कि यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ। उसने यहाँ पे नमाज अदा कर दी कि जो सारा इलाका था हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। तो हिंदुओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान ने हमारे इलाके में आके नमाज क्यों अदा की है
और वो इसमें यानी मुसलमान का नमाज़ पढ़ना बर्दाश्त हुआ, हिंदू ये कहने लगे हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। और जब मुसलमानों को पता चला कि हिंदुओं का सिर्फ एक मुसलमान का नमाज़ पढ़ना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और सिर्फ इस बात के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, तो मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में जो है ना तनाज़ा शुरू हो गया। लड़ाई होते होते बात उस वक्त की अदालत तक चली गई। तो उस वक्त की अदालत के जो जज साहब हैं उनने कहा कि मैं सुबह जगह का मायना करके फिर उसके बाद इसके हक़ में फ़ैसला दूँगा। तो जब सुबह जज ने मायने के लिए आना था तो मुसलमानों के जो वकील थे उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि अगर आप रातों रात इस मस्जिद को तामीर कर दें तो हो सकता है ये फ़ैसला आपके हक़ में हो जाए। तो मुसलमानों ने जो आपस में मशावरत की और मशावरत करने के बाद जो है ना फिर उनने ये तय किया कि हम गामा पहलवान से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और अगर वो हमारी सरपरस्ती करें तो हम एक रात में मस्जिद बना सकते हैं। तो हिंदुओं की चूँकि यहाँ पे अक्सरियत थी, उनका जो है ना लड़ाई झगड़े का भी खौफ था, ख़दशा था कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो फिर जब गामा पहलवान के पास मुसलमानों के जो है ना एक वफ़द गया और उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारी सरपरस्ती करें, हमारी निगरानी करें तो हम जो है ना यहाँ पे एक मस्जिद बनाना चाहते हैं और सुबह इस तरह जज ने आना है और फ़ैसला होना है इसके हक़ में। तो उस गामा पहलवान ने ये कहा कि जो है ना उन्हें जो है ना हामी भर ली और जो है ना वो तशरीफ़ ले आए और वो शालमी चौक में आके वो बैठे और जो है ना बहुत सारे मुसलमान फिर इकट्ठे हुए तो उन्होंने मस्जिद को तामीर करना शुरू कर दिया। और जब सुबह फजर की नमाज अज़ान का टाइम था तो उस वक़्त तक जो है ना मस्जिद को मुकम्मल तामीर कर लिया गया था। तो फिर जब नमाज हो रही थी तो उस वक्त जो है ना हिंदू आए तो हिंदुओं ने देखा कि ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है और मुसलमान तो यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। तो इस तरह हिंदुओं ने एक दूसरे को इकट्ठा करके बुलाया हुआ था। कुछ हिंदू तो ये देख के ही वापस चले गए कि भाई ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है, मुसलमान नमाज भी अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने दूसरे हिंदुओं से जो लोग थे उनसे कहा कि भाई आपने हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया। तो वो आपस में यानी उनको ये कहकर वापस चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद जज आया तो जज ने भी आके क्या देखा कि ये इमारत पहले से तामीर शुदा है, तो जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मजहबी इबादतगाह अगर पहले से तामीर शुदा है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। तो फिर जब अल्लामा इकबाल को पता चला कि मुसलमानों ने एक रात में मस्जिद तामीर कर दी है तो फिर अल्लामा इकबाल तामीर किया। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि जिन्नात ने शहीद तामीर की हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगरचे अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो ये तो बहुत छोटी सी इमारत थी। बहुत बड़ी बड़ी और बुलंद इमारतें भी अल्लाह ताला की मदद से बनाई जा सकती हैं। साढ़े बड़े दसदे ने हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बनया सी ना तो उस तो पहले तो मस्जिद तैयार हुई है तो एक रात च तैयार हुई सी। जी ना मस्जिद ना तैयार होंदी तो इत्थे मंदिर तैयार होना सी। समझ लो मुसलमानों का जज्बा सी, औरतों का बंदियां का जज्बे के नाल ते एक रात तैयार हुई है। सुबह फजर की नमाज हुई इत्थे ते हाली तक उस तरह ही कायम चलती आ रही है। तो इत्थे बहुत दुनिया आती है जी मस्जिद के बारे पुछते हैं तो फोटोआं लाते हैं, हर एक हिस्टरी पुछते हैं पिछली। पहले मिट्टी की तैयार हुई सी, उस बाद फिर पत्थर लगा। मेरा नाम फराज नकवी है। मैं यहाँ पे ऑफिस के काम आया था तो साथ ही मिज़ान बैंक है तो ये मस्जिद थी। मैं बड़ा सुना था इनके बारे कि ये मस्जिद मतलब एक रात में बनी है तो बड़ी क़ीदत थी मुझे कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम ये नमाज़ पढ़ी है इस मस्जिद में। हम पहले ना जज्बा कुछ और होता था, पहले मुसलमान थे वो उनका जज्बा और था, आज भी वैसा ही आ रहा है। माशाल्लाह अच्छी मस्जिद है। मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है मैंने। सर मेरा नाम समीउल्ला है, मैं बाजोड़ की रिहायशी हूँ। तकरीबन 2010-11 से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो इस नमाज में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने आता हूँ। कारी साहब जानते हैं हमें, तो हमें बहुत सुकून महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं। जो मुसलमानों का उस टाइम का जज्बा है और आज का जज्बा है तो अंदाज़े मुताबिक मुझे लगता है कि आज भी ज़िंदा है वो वाला। ये एक रात का मस्जिद है तो उस टाइम तो हम थे नहीं, लेकिन सुना है कि यार एक रात में बना हुआ है मस्जिद। तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है
अक्सरली मैं काम करता हूँ बार बार होता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस मस्जिद में पहुँचूँ, यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ, तो बहुत खुशी महसूस होती है सर, बहुत सुकून महसूस होता है। मेरा नाम एजाज अहमद है जी। मैं यहाँ पे तकरीबन 1970 से दुकान कर रहा हूँ और ये शब बर की मस्जिद जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है और अल्लामा इकबाल ने कहा था मस्जिद तो बना दी शब बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पापी पुराना था बरसों नमाजी बन ना सका। बहरहाल ये मस्जिद बहुत पुरानी है और उसका सामने ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये मोती मंदिर है, इंदिरा गांधी के दादा का नेहरू का मंदिर था और मस्जिद जो थी वो इसके मुकाबले में बनी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मस्जिद नहीं है, तो रातों रात ही तकरीबन 24 घंटों में ये मस्जिद तैयार हो गई थी। पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद है ये और अब आज आपने भी देख लिया है और मस्जिद उसी हालत में जैसे पुरानी पहले थी वैसी की वैसी मस्जिद आज भी वैसी की वैसी ही है। यहाँ पे उस वक़्त मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, हिंदुओं की हुकूमत थी। यहाँ पे ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मंदिर था और मंदिर के सामने जो है ना जगह थी एक, वहाँ पे अपना गामा पहलवान था और यहाँ से कहते थे कि मस्जिद जब बनाई गई है ना रात को शुरू की है 4 बजे इशा के बाद शुरू हुई है और सुबह अज़ानों के फजर की नमाज जब हुई है ना तो मस्जिद तैयार हो गई थी। लोहारी यहाँ से लेकर ना तो अपना दिल्ली दरवाजा तक ईंटों की लाइन लगी हुई थी लोगों की, उन्होंने पत्थर ला के एकदम मतलब रातों रात मस्जिद बनाई थी ये और एक रात में ये मस्जिद सुबह उन्होंने मुआयना करना था, अंग्रेज़ ने आकर मुआयना करना था, डाला ने आकर मुआयना करना था कि ये मस्जिद यहाँ पे जगह है कि नहीं। सुबह आई तो देखा तो हाँ मस्जिद की जगह मौजूद थी, मस्जिद बनी हुई थी उस वक्त। उसने फिर डिक्लेयर किया था कि हाँ मस्जिद ठीक है, मस्जिद की जगह ठीक है। मेरा नाम जी शहजाद अब्दुल हमीद है जी और मैं अंदरून लाहौर का रहने वाला हूँ, रैशी हूँ, जद्दी पुश्ती लोग हैं, हम इधर के रहने वाले। तो ये जो मस्जिद है आप इसके बारे में मैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे बाप दादा ने जो बताया ये एक तारीखी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा तारीखी मस्जिद है। असल में ये जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सारे लोग ये इकट्ठे थे, तो उस वक्त ये मुसलमानों ने कहा कि ये मस्जिद है, हिंदू कहते थे ये मंदिर है। तो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अल्लामा इकबाल साहब थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, वो वकील थे। तो उन लोगों की मुशावरत से और लोगों की मुशावरत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये सुबह आकर देखेंगे ये क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, क्या सिलसिला है। तो मुसलमानों में आपको पता ही है क्या जज्बा होता है। ये आपने जब इस्लाम की बात पे आता है तो वो अल्लाह के हुक्म से फिर और बन जाता है मसला। तो फिर लोगों ने यकदम अल्लाह की मदद से एक रात में खड़ी हो गई थी। ये तारीखी बात है, ये भी ये मस्जिद शब बर एक रात वाली मशहूर है पूरी वर्ल्ड में। इधर से बड़े बड़े सयाह आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। मैं इधर मेरा काम है ये कबाड़ वगैरह का, तो मुझे 25 साल से ऊपर हो गए इस चौक में, 25 साल से ऊपर मुझे हो गए। तो बाप दादा ने बताया, तारीख ने बताया ये एक तारीखी मस्जिद है, अल्लाह पाक की दी हुई एक नेमत है। तो खुदा की मदद से उस वक़्त के लोगों ने ईमान था, जज्बा था, उस वजह से ये एक रात में तमीर हो गई है। इस वजह से इसको एक मस्जिद शब बर अल मशहूर एक रात वाली मस्जिद शालमी चौक कहते हैं। मट्टी और गारे का दौर था, वो मट्टी और गारे के ज़रिए उन्होंने ये इसको तमीर कर दिया अल्लाह पाक की रहमत से, नबी पाक के सदक़े। तो ये ना मतलब कि खड़ी हो गई। सुबह आके देखा जब गवर्नमेंट ने तो ये मस्जिद थी, फजर के अज़ान इन्होंने दे दी मुसलमानों ने। तो जैसे हिंदू पहले सोए रहे थे उस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से वे सोए हुए थे। I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity.
as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello again, and welcome to Yesterday, Today and Tomorrow with Robin Ashby on South Asia Global Television. This time I'm going to talk about my night with Princess Diana, how that came about, and perhaps inject a little bit of humour into what is a very sad subject. Most people of my generation can remember where they were when they heard of the assassination of United States President John Fitzgerald Kennedy. I was a boy in my teens at that time. People of a later generation can remember where they were when they heard that Princess Diana had been killed. I was in a car driving from Newcastle upon Tyne to the south coast of England at about 5 o'clock in the morning. And I had my radio on and it told me that there was an obituary going on. And I couldn't work out who it was for a while, and then suddenly it dawned that they were actually talking about Princess Diana. I had met her 7 years previously, about 6 years before her divorce from now King Charles III, in London at the Barbican Theatre in the centre of London at a concert. I'll come back to that concert a little later on. Princess Diana was greatly mourned by the people, as you will know if you watch, for instance, the Netflix series. But as it happened, I had another concert to perform in Germany, and I was actually leaving London as the cortege set out. So I missed it live and missed most of it on television as well. But when I came back, I wondered if there was anything I could do to help to commemorate her life. I was working in the defence sector at that time, and I wondered if it might be possible to put on a conference about landmine clearance, because that, as we well know, was one of her big charities and some of the most
iconic photographs of Princess Diana were taken in minefields in Africa. So I asked around, and I got a lot of encouragement to do it. And indeed, when I checked out with our Ministry of Defence, they actually volunteered a colonel to come along and speak on this topic. So I believe that we made a contribution, a very small contribution, to the legacy that she left behind her. So, how did all this come about? Many years ago, before the Second World War, there was a young lad living in Berlin. He was of Jewish parentage. He's called Gerhard Hoffnung. Hoffnung is German for hope. And they were living, he and his parents were living in Berlin, and the Nazi threat was getting worse and worse to Jewish people. He went to a private school, and one day the boys were playing football in the back garden, and the ball went over the wall. Like boys everywhere, they wanted to go and retrieve the ball, but they were told, no, you can't do that, because Herr Himmler wouldn't like it. Herr Himmler being the architect of the persecution of the Jews. But the human touch is that at the end of the SS guards' shift next door, they threw the ball back over the wall. Nevertheless, his mother in particular decided that Gerhard needed to leave Germany, and they came to England. His name was anglicised and he became Gerard Hoffnung. He went to school here in London, but from a very early age he had been a prolific drawer of cartoons and drawings, and he always tried to see the funny side of life. Indeed, there was a school report from him, from his headmaster, saying that Gerard needs to realise that life is not one big cartoon. But at a very young age, at the age of 15, he sold his first cartoon to a humorous magazine in London, and over the years he became famous as a cartoonist, as a raconteur, which was very odd, because this young Jewish man looked and sounded like an old English gentleman. He had a bald head, he was chubby, he smoked a pipe, and he became very famous, particularly for his monologues. And if you ever want to hear the sort of thing it is, if you put into your search engine the Barrel of Bricks story, you will hear the way that he could play an audience. He was a masterful comedian as well as everything else. In the early 1950s, he had the idea that what he could do would be to show the humour in music. And so he had a lot of musical friends, and he gathered them all round and he said, I've got this idea for a concert which shows the humour in music with all original pieces, and I want you all to be involved. And his friends said, well, great idea, but it all sounds very impractical. But he made it happen, and that first concert happened at the Royal Festival Hall. It was so successful, the whole thing sold out in 2 hours, a speed of ticket sales that had only ever been equalled by Liberace, the pianist. It was so successful, 2 years later, they did it again. Then tragedy struck. One day, he was not feeling well. Within hours, he was dead of a brain hemorrhage, and he died at the age of 34, leaving a young widow and 2 young children. That could have been the end of that part of his legacy, but my business partner, himself a Czech Jew refugee who had come here just before the Second World War, came to know Annette Hoffnung and persuaded her to, Annette Hoffnung being his widow, persuaded her to allow him to put on some concerts to show how he could treat them. And indeed, that first concert was here in Newcastle. After that, they went around the world
doing concerts with resident orchestras. And during the history of those Hoffman concerts on the road, as it were, they went all the way from the Hollywood Bowl in California to Cowboys in Billings, Montana, at one of the smallest capitals, all the way up to Japan, where we did several tours. I say we because later on in the 1980s, I became involved with Tom Bergman on business deals, and he brought me in to the concerts. So when after our concert with Princess Diana in 1990, he had the second of his heart attacks, and some years later he had another one. That one came after we'd had a grand tour. We'd been in Leipzig and Berlin in Germany. We then went to Japan, in Hamamatsu, in Tokyo, and Sendai, and we come back to do a concert in Prague in Czechoslovakia. As I mentioned, Tom originally came from Czechoslovakia. He had fled there when the Nazis moved in for the Second World War. He'd gone back in 1945 to run his family business. He'd become a Czech member of parliament, and one night in 1948 he had a call from a friend in the security service. His friend said, "I'm coming to see you in the morning." That was a cue that the Russians were taking over the government of Czechoslovakia and were coming to arrest him. So at a couple of hours' notice, he and some family friends walked out of the country. They were crossing a ploughed field in the snow when a guard aboard came up to them with a rifle and said, "Who are you and where are you going?" To which Tom answered, "We're going for a walk." And the guard pulled up his rifle and said, "Good luck." They walked out, and he came via Austria, in France, where he played the piano in bars for tips, and eventually ended up in England, where he became the founder of the first public relations company outside of London, and concerts were in his blood. So when the Berlin Wall fell and Czechoslovakia became free, he said, "We must go to Czechoslovakia and do a concert." I was completely in agreement. I said, "We'll do it for free." And he said, "No, we will get paid for it, and we'll get paid in hard currency as well." So we went to Prague, and we took part in Prague Spring, one of the most famous concerts in the Czech musical calendar, at the Smetana Hall. We recorded it. We actually made a video of it, which is still available online if you'd like to take a look. And after that concert, very successful, he'd gone back to his home country as a musician on national television, the thing that he'd always wanted to achieve in his life. And a couple of days later, while having a small holiday there, he had another heart attack and died. We went over to Czechoslovakia to pick up his ashes, and we brought them back here to Newcastle, where they are now buried. We thought, well, Netta and I were discussing this on the plane as we were bringing his urn back with us. And we said, well, we don't necessarily have to stop without Tom. Maybe there's a way we can carry on. And indeed we did. And we did that for many years. And we had concerts back in Japan again, in all over Europe, at festivals for Fasching, which is the Easter celebrations, the pre-Easter celebrations, for New Year's concerts. And these continue to be greatly enjoyed. And I'll tell you more about the content of those and my conversation with Princess Diana in the next part.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. I was talking about humour in music and how we highlighted it. Just as a small demonstration, not a lot of people know, except for small boys,
that if you blow into a bottle, you can get a musical note. And here I have 2 bottles, and I'm going to show you that you can indeed get a musical note out. Now you'll notice that these are 2 different notes. It is possible to tune these to the notes of the musical scale. And if you've got 8 bottles, you can get the 8 musical notes in the scale. And if you have 8 bottles tuned, you can play a tune. And one of the tunes that we played in our concerts was the Haydn Surprise Symphony with extra surprises. The point about Haydn Surprise Symphony is it was to stop people falling asleep. It had one big note which woke people up. The thing is, once they are awake, are they going to fall back asleep? What we said was, well, we will put in additional surprises, including local celebrities, VIPs, people that people recognise, playing the bottles, playing the surprise like that. Now that was one of our pieces, but we started off basically trying to visualise, to bring to life the cartoons that Gerard had drawn of musicians in his early life. So the beginning of our concert was not the conductor walking on as is usual, the usual start, but there would be a huge crash of cymbals and a shout of pain. Then a man with a bald head, like the cartoon, would walk on with a pair of cymbals in his hands and his nose in a bandage. This had told people, this is funny, you're allowed to laugh. And he would then go off and the conductor would then come on. He would find that there was his concert master, the leader of the orchestra, was missing. At which point there would be the sounds of a police siren, and on would walk somebody carrying a violin case, obviously slightly the worse for wear from alcohol. That policeman was often me. I would be dressed up in a police uniform and I would come on with my violin case and I would sit in the vacant leader's spot. I would talk to the audience as I was inebriated. I was jolly. I would be disturbing the whole concert there, and I would get my violin out and I would go as if to play it. At which point there would be another police siren, and another policeman would come on, breathalyse me, and take me away. This was all simulated, except when we did the Prague concert, because at lunchtime I'd had a glass of wine, and the policeman was a real policeman, not an actor policeman, and had a real breathalyzer kit into which he got me to blow, and it turned green for the camera. So I was really living the life of being this drunken violinist. So much so that was the only occasion on which I ever wore a pair of jeans. And the reason that I wore a pair of jeans then was because my body double had been filmed previously driving a motorcycle through the streets of Prague, being chased by a police car. Never before, never again have I worn jeans. So the violinist is taken away. There is nobody to be the leader of the orchestra. And the conductor offers the job to the second violinist, and all of them refused to do the job because they were not paid enough money. So he would ask the orchestra, what do I do? And at which point there would be a tinkling of a triangle and somebody would jump up and say, I'll do it, and would walk down, beggars can't be choosers, and would take up position. In reality, of course, he was the real leader of the orchestra, and he would give the tuning note for the orchestra, and then the concert would proceed along. Another of the pieces was called Concerto d'Amore, the Concerto of Love. There's a famous cartoon within the Hoffmann repertoire of a man and a woman playing together on a single violin. And this Concerto d'Amore
was written by a famous English composer called Wilfred Joseph, who also trained here in the great city of Newcastle upon Tyne. And he wrote a number of pieces for us under the pseudonym of Maynard Nelson. And Maynard and Nelson were two confectionery or sweetie manufacturers here in Newcastle, and to hide the fact that this serious musician was writing humorous music, he would use this name of Maynard Nelson. So, Concerto d'Amore. I would have done a quick change for this piece, and I would be no longer dressed as a policeman, but I'd be dressed as an impresario, the agent for a young, pretty female violinist who would have a contract to play in the concert, as also had a male violinist. And so, to avoid legal complications, they both had to play. Now, clearly, there would be a lot of tension between the two of them, and that would play out to begin with, until the female violinist would cry a little tear, and the male violinist would give her the opportunity to play on her own. At which point he noticed she's a good player, and he'd notice also she's pretty. And so he gets very interested in her. And the two of them start playing together and to each other. And this goes on throughout the whole of the piece. And at the end, she's holding the violin and he is playing his bow as they walk off together off stage with a quick kiss just as they leave. Brings the house down. That was another one of the cartoons that was envisaged by Gerard, which was made into an entire musical work. There's the cymbals, the beer bottles. There is a cartoon of a tenor singer who has a waistcoat which has the loud and the soft button. And we had an entire sequence of a man for whom we prepared a special waistcoat which would make him sing louder and softer. And he had a whole piece of musical pastiche, cartoonish, on which he would sing the aria, which is called Aria. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash.
So I use the London Lash. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। There was a range of musical instruments on which we played surprises, including one of them which was a euphonium based on a cartoon which had a beer tap on it. We had this specially made, and inside the euphonium was a reservoir into which beer was poured, and during the piece the euphonium player would turn the tap, he would draw some beer from his euphonium and he would drink it. We would pick on local celebrities who had a party piece. We had a famous British minister who once played the guitar. We always get a ballerina who would dance around. Sometimes we would have a harpsichord player with whom the conductor would make great eyes, and we would get anything which we thought would be a surprise. In fact, in the earliest days, the very first concert, the surprise was 3 vacuum cleaners and a floor polisher, which almost literally brought the house down because of the vibrations that came from it. The final piece in the whole concert was our piano concerto. We had 2 of those for 2 different repertoires. We had the Concerto Popolare by Franz Reisenstein, again a very famous English composer, and we had the Disconcerto written by Maynard Nelson. And we would use whichever one was appropriate. On a second visit to a city, we would use the Disconcerto, and the first one we used Popolare. And this again was to illustrate the the tension between the piano player and the conductor. Indeed, on one of our concerts, which was filmed over 2 days at the Royal Festival Hall and was later released as a disc of the entire programme, which is still available second-hand on websites. If you're interested, they're still obtainable for very little money. When there was a dispute between the soloist pianist and the conductor about how the beginning of the concerto should be played, this argument culminated in the conductor going to show how it to be done, the piano player picking up the conductor's baton and then conducted the whole of the concert. The surprise, the gag there was that both of these were talented pianists and talented conductors, and that would bring the house down and would be the end of the concert. Except we had special encores prepared. One of them was where the whole orchestra would take part, not playing their instruments,
but chanting the names of composers. And we would also have another one based on Smetana's, one of Smetana's works, where the tenor would come on trying to sing O Solo Mio as his encore, and would be chased away and would run round the auditorium being chased, and would end up on a balcony far above, where he would sing his very final O Sole Mio. After the concert, with which Princess Diana attended, she was the guest of honour, it was in aid of the British Lung Foundation, another one of her charities. There was a reception. I was at that reception. I talked to Princess Diana, and I told her that I was the policeman that she had seen on stage. She was delighted to hear this, and she told me the story of how she and Fergie, the Duchess of York, had dressed up as policewomen and gone out night clubbing in London, which is one of the light-hearted episodes within her life, which is one of the reasons that people loved her so much. It's me, Gia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छांव के नीचे कैंप मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया।
जहां पर मुख्तलिफ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best.
For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
अरब कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। It's me, Jia. This is my Street Vibes. Hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है।
और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash.
Hello, my name's Alan Curry, and I'm standing here now under the title of Badge of Honour. Now, how did that happen? Well, I met a few people who had conversations relevant to today's society, and maybe some of the concerns we might have about some of the youth and some of the individuals they may meet, some of the people who might be their heroes, some of the people who might be hero worshipped, if that makes sense. And maybe some of my background or some of my experiences, others may listen to and wonder whether I could lead a type of life like that. Now, that's not to say I've had a perfect life, but I've done a number of things over the years that I'm probably very proud of. But I have to really start at the beginning, where it's an easy one, wasn't it? I was born at an early age. But I always interested now when I listen to politicians in particular, and they always seem to have to say they came from a working class background, or their dad worked in a factory to sort of prove the meritocracy of what they're getting involved in. My father was a joiner. My mother worked in a shoe shop, and we lived in a 2-bedroom flat. And I don't think we were poor, but if we were poor, I obviously didn't know at such an early age. But they were role models for myself. Again, I wonder today when we discuss things, whether or not we have as many role models within the family as opposed to when we did in days gone by. I say days gone by because obviously I'm, a little older than some people. But my upbringing was very easy in the sense that I was looked after, I was well fed, I was nourished, but I was also a little bit of, how can I say, a little bit off the wall in some of the things I used to get up to. I remember my mum telling me that she was in bed and knocked on the door in the flat with a neighbour saying, "Do you know where Alan is?" Well, my nana, who was a good church-going lady, lived around the corner from us. It would appear that at 3 years of age, I climbed out the window at 10 o'clock at night and walked around with my nana's. We were the only flat in the location that had locks on the outside of the window to keep me in. Now, whether that was a good start for how I was going to make progress in my career or other things, it did appear that I had the element of thinking outside the box, even at 3 or 4 of those type of things. We have another situation. I have a sister who's 18 months younger than me, and then my father and my mother used to make elderberry wine, which was alcoholic. Well, apparently I took her on the drink when I was 3 years of age and she was 18 months old, and the two of us were drunk at that time. But it was part of growing up. You learnt by your mistakes. There's a little thing, but there was 1 or 2 things I may not have got things right, and my mum would say, "Wait till your father got home." And he would never really chastise me, but it was the threat of the father. And when it comes to things like being at school, my mum used to put me out at 5, 6 years of age, and I'd walk to the local school. You don't see any of that now. I don't think any children know how to get to school other than buy a car. But on that same token, when I'm doing that type of thing, my father never ever really said good things about me. But that wasn't to say he wasn't proud of me, and we can go into later on about aspects of it. But when he always told my mum, particularly when I played in football teams and things like that, he followed me, he took me everywhere. He would always tell me when I had a bad game, and then I'd speak to my mum later on, and she would say, "Your dad said you had a good game today." And just that sort of kindness, respect, and actually looking always for not thanks, but just the fact he thought well of me. He also told me when I did things wrong, and if I was sick at school, and I've always had a good sickness record as an adult, but if I was sick at school, my father wouldn't allow me to stay off. But if I had to be off, my mum, you know what mums and dads are like, mum will say you shouldn't go to school. I had to stay in bed all day. There was no lying around watching television or anything like that. So there was no point in being ill because you never got a day off. And all those sort of things that we talk about now, parental responsibility, hopefully that's spun off into some of my life in relation to the way I brought my children up, and had some influence on my grandchildren. But it starts with the family. And I think if we go back to some of the things we're talking about, and maybe we'll progress as I talk about other things I've done in my career, I think the family, the cohesion within the family,
I'd love to see it come back, and maybe our heroes or people who we respect are not necessarily people who've made a lot of money or who actually drive fast cars, as opposed to people who may have a story to tell and can manage and work on the respect and responsibility from an upbringing and some of the responsibilities that adults have. Sadly, I do see certain aspects around the streets. I mean, I like to drink like everybody else now in this sort of world. And how many times now we go to a public house and the mother's there with the child and the child's running around the pub and without any respect for others. So all those little things from my background, bringing myself up to talk about these different things and how it helped me progress into the role I moved on to, my career, and even after a full career, we're maybe going to be talking about some of those things. And if anybody listens and thinks it's worthwhile, and I always used to say, if I'm talking to people and you like what I say and you think that's possibly for me, I could follow that, well, so be it. But if you say, well, it's not for me, well, once again, I haven't got the monopoly on wisdom. I have a lot of experience now, and sadly, you only get experience by making mistakes. But I would go back to the family upbringing as being a core part of my role, understanding, and how I progressed. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. You should not let us go, we're fighting. Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छांव के नीचे कैंप मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया।
जहां पर मुख्तलिफ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। So, I mentioned about my father, my parents, their influence. I went to, obviously, a junior school, and at those days, I keep saying those days, don't I? The 11 plus was the exam which separated people, pretty comprehensive what we do now. So at 11 plus, they separated in theory between the intelligent kids and maybe not so intelligent kids. So I sat 11 plus and didn't pass. So I went to what was then known as a secondary modern school. And I always remember in my junior school days, you used to get your school reports. And they used to say, and the one my mum always refers to is, Alan is quite happy with what he does. So I was quite happy playing football. I was quite happy doing what boys should do at school. And maybe studying wasn't my forte, but I didn't think I was thick. Or if I was, I didn't know I was. But on the same token, I failed my 11 plus, because you say fail now, or fail there, now you'd say you weren't successful. But I moved to what was then a secondary modern school. And the classes were graded A, B, C. I was in the A class. I've now put in amongst 100 children, shall we say, in the 11 years older. And my birthday is the 27th of August. So I was always the youngest in the class, with the way the classes were set out. And I went through the first year, and I was the top student out of those 100. So I'm a failure at one school,
and I'm the most successful student at 11 years of age. How? I don't know. Probably Alan just woke up a little bit instead of actually being happy with what he does. And at those days, again, you could then sit what they called the 13 plus. And if you passed that, you moved to a grammar school because you were showing a bit of potential. Well, I still like to play football. I enjoyed what I was doing. I was with my mates. So the next year I wasn't the top student. Now that might just be laziness. It might just be the fact I might have been a little bit more cuter the way I wanted to operate, but I enjoyed where I was. And on reflection, it was a good decision of mine, even at 12 years of age, because the rest put me in store to how I progressed through. So I then ended up, and one of the best things that happened to me, I think, was having the ability to play for the local football team, the school team, because when you play with teams and you're bonding with individuals, there's two parts happening to it. You get a bit of status within your peers because of the fact you're a member of the team. And we were quite successful, and you travelled with your friends and you did whatever. So around those sort of times, you would be getting more kudos than maybe you would if you were just a member of the gang. So I was, I've got to go back, as I'm going to talk about things, and I bring my parental responsibility in. Little sayings my dad always said. And so when you hear me talk about things I've done, he always used to say, self-praise is no recommendation. So when I'm talking like this, and I'm talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself, there's a couple of bad ones I'm sure as well, but on the same token, just remember, self-praise is no recommendation. It's for you, the viewer, to make your mind up whether what I say has some merit, it's interesting, if it can be, and how you view it yourself. So I'm in the football team. Living in the northeast, the key leaving at school at 15, which you could, I actually stopped on the following year till I was 16. But most people, I left school in 1972. I know as you look at me here, that seems a long way away with such a young looking face, but we'll carry on about that at a later date. But on the same token, in 1972, most people left school and went into an apprenticeship or they worked at the ministry. And I didn't think that was for me. I didn't like the idea of sitting behind a desk. I wanted to be active, and I wasn't sure about an apprenticeship either. So there was a thing called the police cadets. Now, the police cadets, police officers in the mid-70s were not well paid. Most people went into apprenticeships, and once they'd done an apprenticeship, they didn't leave the different trades to join the police. So they had a thing called police cadets for young people between 16 and 19, where they would keep them in the building, keep them on ice, if that makes sense, teach them good habits, but it wasn't the easiest thing to get into. So I applied, and my career development officer at the time said, look, don't bother, you're not going to get in. But I did apply, and I went to what was Morpeth at the time, if you know the area here, and went for my very first interview at 15 years of age. Never done anything like that before. Sat in front of 3 adult police officers and asked questions and did things. And some of the things I also did for my self-fulfillment was, I had 2 paper rounds, I played in a football team, I used to go out once a week to collect charity pool money to get little bits of extra pocket money to help myself for the youth club and all the rest of it. So when I'm doing this interview, I'm able to tell people what I'm doing, which is, I suspect at the time, was out of the ordinary, as I was trying to develop and create and be a better person for myself. And I know now, because I've seen the actual application form, and they viewed me, and they've always put at the bottom the comment, and it said, ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है?
किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
So I sat in front of two senior police officers, mature, obviously looking at only 15 years of age. They asked me questions. I hopefully answered them in an assertive but not cocky way. They must have seen something in me, but I've actually seen the application form. And it's not like today's recruitment, and it's got on the bottom of the form, will always give him his best. He's young enough, will never top the bill, worth a try. Now, can you imagine that sort of introduction to a role, which actually wasn't the greatest sort of compliment, but I put it into perspective. I was one of 316 people who applied for 16 jobs, and I got one of them. So as a consequence, I'm now being accepted to be a police cadet. I'm just before my 16th birthday, and I go to a location known as Akeley Heads, where there's 120 cadets, male and female, in what really was a little bit of a boys' army situation. I was taught good habits. I was actually taught how to look after myself. I was taught how to keep fit. I was take care of myself, but also respect people, to understand discipline. The lights went out at 11 o'clock, curfew every night. And I suppose part I've maybe missed is here, what was my early influences to join the police? Well, if you're going to look back, and sadly on YouTube or whatever, if you follow that, you'll see some clips of two police shows at the time. One was Z-Cars and one was Dixon a Dog Green. And if you ever look at those in black and white, I actually thought that looks as if it's interesting. And on the same token, it looked as if I wouldn't be sitting behind a desk. Notwithstanding, we can talk about paperwork and things like that at a later date. And the other side, which was even then in me, people joined the police to be a help and source of respect and assistance to the community. So you actually did want to help people, and I'm sure we'll get in the opportunity where a number of times I've helped people, a number of times I may not have been thanked for it, but that didn't put you off doing it. So when I'm now at Akeley Heads, I spent 2 years there, and I was the youngest on the school again. I'm the youngest wherever I've gone. I'm probably still one of the youngest that's going to be on one of these films. We can talk about that again later on, but on the same token. So I'm now amongst bigger boys and girls, 18, 18 and a half. In fairness, there was an element of, how can I put it, physical activity that was sometimes a little bit rough and coarse, but it didn't do any harm. I actually broke my leg when I was there playing football, and I was on crutches for 14 weeks. We had a PTI at the time who was, we loved him to death. But I went in to say, I'm sorry, Mr. Wardle, that's what they called him, I've broke my leg. He made me sit in the corner and do sit-ups for an hour. I wasn't allowed anything off. So, I've talked about my dad wouldn't let us be off. And now even in the world I'm now frequenting, the discipline was there. Just because you've got a broken leg doesn't mean to say you can't participate. And it was real character building. You took everything on the chin, you sort of learned, and then of course, you learned how to deal with adversity and the consequence of adversity. And from being a police cadet for 2 years, I didn't learn about the law, I just learned how to look after myself, discipline, how to maybe, as I said, deal with adversity. Not everything was right. Sometimes I hated it. I definitely hated the first year being away from home, but I wasn't going to give in. And I just thought, this is not going to beat me. And that turned me moving forward. So that takes me up to 18 and a half, 19 years of age. I've now joined the police. Hopefully what you've listened to on this episode takes you to that stage. The next episode will take us into the beginning of 32 years career in the police service of Northumbria.
It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash.
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, बहुत बढ़िया." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
The history of astrology and tarot cards is almost 2,000 years old. Since the inception of mankind, man is in continuous search of heavenly bodies. Many of the astrologers chart the position of the stars in the sky to gain insight into human personality and even draw predictions about the future. देखिए एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कदीम इल्म रखता है और आप देखें कि तारीख़ के दुराहों को लें तो यहूदी जो है इस इल्म को जो है वो बहुत मानते थे और मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस आती होती थी। राहब जो है इसके ऊपर बड़ा यकीन रखते होते थे और यहूदियों में बाज़ तो देखा गया है कि ये एस्ट्रोलॉजी को जो है वो अपने मज़हब का हिस्सा भी समझते हैं, उसको लेके चलते हैं। देखिए जिस तरह मुख्तलिफ सितारों की अगर बात करते हैं, सियारा ज़ोहल है, जुपिटर है, तो ये 12 सितारे हैं या 9 सियारे हैं। ये जो सियारा है ये अल्लाह ताला की मखलूक है और ये एक रूह है। हर सितारे की अपनी एक रूह होती है और वो जो रूह है वो हर बंदे के साथ एक डीलिंग करती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर दाऊद हूँ तो मेरे ऊपर अगर सियारा मुश्तरी का असर है तो वो सियारा मुश्तरी जो मेरे साथ डीलिंग करता है वो अपनी रूह के मुताबिक करता है या उसका मेरे करैक्टर के साथ क्या तल्लक है उसके मुताबिक उसकी ऊंच नीच होती है। There are many astrologers around us. Some of them are experienced in their fields, while others do not demonstrate their effectiveness in controlled studies and has no scientific validity, which proves them pseudoscience. यहीं तो एक मसला पैदा होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर एक तरीके बदाई से बेहतरीन प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। उसको करने के लिए मुख्तलिफ अलूमात का सहारा लेना पड़ता है। उसको किन अलूमात का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी से उसके तारीख बदाई से, उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका वक्त तो ले लूँगा, उसका सियारा तो पता कर लूँगा, मगर मुझे उसका नाम पता होना चाहिए। मैं उसके नाम से, न्यूमरोलॉजी से इल्म जफ़र एक बहुत बड़ा इल्म है, उससे मैं उसका इल्मुल अदा से उसका नाम निकालूंगा, उसकी वालदा का नाम निकालूंगा। तो मैं इन तमाम चीज़ों की कम्बिनेशन से उसको न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ कि इसकी जो पैदाइश है उस वक्त सितारा कौन सा था, इसके वालदा के असरात इसके ऊपर कैसे आए, इसकी अपनी शख्सियत कैसी है। A masterstroke like Alan Leo, father of astrology, godmother of future telling Baba Vanga, and Evangeline Adam have amazed the world by making many prophecies and prognostication. But there is still a blank space of deep understanding of the basic knowledge of astrology. The point to ponder is from where concept of astrology begins and on what basis do they make these prophecies. बेसिकली तो ये जो इल्म है ये बुज़ुर्गों से वदीयत होता है और बुज़ुर्ग इसका बड़ा फ़ायदा उठाते थे। इस ही इल्म को उठाकर लोगों ने इसको साइंस की तरफ लेके आए। हकीकतन ये अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतों का, बहुत ज़्यादा पावर्स का मालिक बनाया। वो इंसान ही है जो अपनी ताकत के ज़ोर पर जो है वो 7 समुंदर पार के जो है मामलात को देख पाता है। मेरे सामने एक तस्वीर चल पड़ती है उस बंदे की, उसका करैक्टर चल पड़ता है। वो किस तरह का करैक्टर है, वो करैक्टर मेरे दिल पर जो है वदीयत होता है और कुछ उसके लिए मैंने तपस्या, इबादत और पढ़ाइयाँ, ज़िक्र अज़कार मुख्तलिफ किए हैं और ख़ासकर बुज़ुर्गों की अता है मेरे साथ। It is believed that all the stars in our galaxy lighten a strong knowledge, and this divine knowledge influences the life of every individual, but it is still a mystery. This point actually forces to think that how a life of an ordinary person can be affected by a star which is billions miles away from this existing life zone. देखें सितारों में ताकत किस तरह होती है। एक बंदे का सियारा मुश्तरी शरफ़े जो है शरफ़ में है और एक का मुश्तरी जो है वो ज़वाल में है। जो शरफ़ का मकाम है वहाँ पे आकर आपको मुख्तलिफ इबादतें, तपस्या और अपने वजद से और अपनी अंदर की ताकत से या बुज़ुर्गों की ताकत से ऐसे अमाल करने पड़ते हैं जिससे वो ताकत आपकी बढ़ जाती है। वो ताकत किस तरह की होती है? वो ताकत आपको दूसरों से मुनफरद करती है। वो ताकत आपको दूसरों से ऐसी शक्ति और ऐसी पावर लेके आती है जिससे आप लोगों की जो जिस तरह बवशा या उसकी जो है उसका मुकद्दर, उसकी तकदीर और उसके ऊपर वो आप उसको पढ़ सकते हो।
كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام Miracle, 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 carnival, Ghosts are creatures about whom everyone has listened some stories, and every holy book has mentioned about it. There are many movies on ghosts in multiple languages. That mean we believe that ghosts exist. But when it comes to how to control them or how to save humans from these creatures, we consider it a trickery. जिन्नात की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, अच्छे और बुरे। अच्छों में अब हम ये कह सकते हैं मुसलमान भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं जो अच्छे हैं, और बुरों में मुकम्मल तौर पर बुरे वो हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, यानी इस जहान के बनाने वाले को नहीं मानते। वो जो हैं वो जिन्नात, उनको बुरे जिन्नात में शुमार किया जाता है। उनके बारे में कहानियाँ घड़ी जाती हैं कि वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब इन जो बुरे इंसानों में जो नुकसान पहुंचाते हैं वो उनको नाम दिया जाता है शयातीन का। असल में वो शैतान नहीं है, वो जिन्नों की ही अम्मार की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन शैतान जो है वो उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। The presence of ghosts is mentioned in all four holy books. There come several queries about the existence of ghosts. How much power does a ghost have? Or how ancient is this creature? Or how do they communicate with them? Where do they live? तो वो इंसानी जहाँ ज़िंदगी जहाँ तक है, कितने फीट ऊपर, मसलन मीटर से हिसाब लगा लें तो 4 किलोमीटर ऊपर तक इंसान सांस ले सकता है। उसके बाद उसकी सांस दुश्वार हो जाती है, उससे ऊपर उनका आलम है। फिर इस ज़मीन से आउट भी कहीं तक भी जा सकते हैं, ज़मीन की हदूद से बाहर भी जा सकते हैं। उन्हें मूव करने के लिए, किसी ट्रैवल करने के लिए किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो शफ़ाफ़ है। शफ़ाफ़ से मुराद कोई मादी जिस्म नहीं है उनका जिसको टच करें, पकड़ सकें, मसलन उससे कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर सकें, जैसा मशहूर है दुनिया में। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। In Quran, Surah Jinn, Allah Almighty clearly indicate the presence of ghosts. Also, what kind of powers do they have, and to which extent these ghosts are related to the ordinary man. सहाबी जिन ज़िंदा मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में, बल्कि हज़रत ईसा के सहाबी भी मौजूद हैं। उनमें से एक जनाब ज़ाफ़र जिन है जो बहुत मशहूर है, और मुख्तलिफ़ किताबों में उनके तज़किरे हैं। करबला के मैदान में भी जनाब ज़ाफ़र जिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए थे। देखा कि उनके सामने बहुत बड़ा लश्कर है और ये मुख्तसर से अफराद हैं और उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमारी जो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, हम अगर अल्लाह हमें इजाज़त दे, यानी अगर आप कहें तो हम एक्स्ट्रा पावर से आपको मदद मुहैया कर देंगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मैंने आपसे पहले कहा कि जिन्नात नुकसान और फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, तो वो कैसे नुकसान पहुँचाते? In Surah Imran, verse number 185, it is stated that every soul will taste the death. This is also mentioned in all holy books. In the same way,
the ghosts have aged and probably a day of resurrection will be fixed for their judgment. जिन्नात के नॉर्मल उम्र जो है इस कैटेगरी की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो औसत उम्र उनकी 1500 साल है, 2000 तक भी जाती है, 2500 साल तक भी जाती है। जो इनसे बड़ी किस्म है उनकी लाखों साल है, जैसे जो शैतान है, जैसे इफरीत है, उनकी बहुत ज़्यादा एज है, यानी उनकी ज़िंदगियाँ लंबी है। जो जिन जिन्नात के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इस दुनिया में इंसान के साथ अल्लाह ने उन्हें इबादत पर मामूर किया है, वो जिन्नात जो है उनकी औसत उम्र 1500 साल है। वैसे कुछ जिन्नात के बारे में मालूम हुआ है 2500 साल यानी 2500 साल 2600 साल भी उनकी एज रही है। यानी इस वक्त बहुत से जिन्नात मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम का दौरानिया देखा, बहुत से जिन्नात ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने हज़रत ईसा का दौरानिया देखा, यानी हज़रत ईसा से मिले हैं, अभी भी ज़िंदा हैं। रहते कहाँ हैं जो आपने पूछा माज़रत, इनकी रहाइश जो है वो इस ज़मीन पे नहीं है। इनकी रहाइश का हिस्सा जो है वो इंसानी ज़िंदगी जहाँ तक है, यानी इंसान जहाँ तक सांस इजीली ले सकता है, उससे ऊपर है। और ये शफ़ाफ़ मखलूक है। हम इंसान बने हैं मिट्टी से, जैसे हम कहते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं है, हमारे पूरे वजूद में कहीं मिट्टी नहीं है। We have heard the stories of the ghosts, that they have been roaming around for many years. It is assumed that all the ghosts not only have same nature. Some of these ghosts will be rulers and some will be subjected, which means there will be different types of ghosts. जनाब जाफ़र जिन ये लगभग 80-90 साल पहले तक तो ज़िंदा थे, उनके मुख्तलिफ़ अफराद से कांटेक्ट था। जब उनकी डेथ हुई तो बड़ा मशहूर हुआ दुनिया में, मुतअद्दिद ममालिक में उनके लिए मजालिस रखी गई। बड़े बड़े उलमा ने, हमारे शियों में चूँकि राइज है, कोई मरता है तो उसके लिए मजलिस रखी जाती है। When a man tries to communicate or contact other creatures of the world, specifically ghosts, it is necessary that an individual must exclude all the wishful thinking and purify its souls like a divine soul. Also diminishes all its attachments with the world, and this way communicate between humans and ghosts can be possible. देखें, मेरा कांटेक्ट किसी दुनियावी नीयत से नहीं है। मैं नॉलेज का आदमी हूँ, पढ़ाई का आदमी हूँ, किताबों का आदमी हूँ, तो मुझे हिस्ट्री के जो मिसिंग पार्ट होते हैं उनके ज़रिए, उनके सिलसिले में मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, कोई अपनी विश के लिए, कोई और दिगर ज़रूरत के लिए नहीं। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here
and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello everyone, my name is Terence South. I formerly served in the British Army, and here today I'm going to talk to you about In the Line of Duty series. The thing about the line of duty, where does it come from? What makes you want to do it? And so for me it goes back to my childhood.
I was always fit, always physically doing things. I was always a footballer. I was always a rugby player. I did what everybody else did, fitted in nicely. But one thing I did do was I was always part of a team. And that's one thing I hadn't realised. I enjoyed being a team member. And one thing about being team members in your youth, you should really respect that it takes everybody in the team to do the job. Whether in a football team, rugby team, swimming team, everybody's got to win. Everybody's got to do the best. It's a bit like, it's not like today where you've got people on the internet and they haven't really achieved much to get where they are. All they've been good is technically savvy and preying on people who are sort of weaker than them. If you go back 50 years, you get people who have actually constructed life and done things and enjoyed things without money. And a lot of things orientate around money. And in later life, I spent 23 years living in China. And I seen China go from a poor country to a rich country. And in that time, the only thing that changed people was money. And it becomes greed, it becomes an obsession. But going back to my youth and going back to the line of duty, I was always a team member, always played my part. Didn't necessarily always win. But when you didn't win, you learned more than when you did win. If you did win, sometimes you didn't know why you won. Were you good that day? Or were they just bad? Were they missing someone? So that was the thing. So when I was little, sort of junior school, I had a milk round. I used to get up every morning, 4 o'clock, go do a milk round, and then go to school. So instead of buying milk at the supermarket, I would go to a dairy, would go out on a truck, and we would deliver hundreds of houses their milk. So when they opened the door in the morning, bottle of milk, that was it. And that was the first time I really understood people letting you down. Because when the weather was bad, and it was snowing and it was throwing it down, it would be a case of, open the curtains, got to go to work. But you're only 15, you're only 14. Well, at the end of the week, you've got the money. You get up, you go out, you get wet. But you did that. Sometimes you were working with lads who were like, oh, I slept in, I couldn't get up, my mum wouldn't let us go, my dad wouldn't let us go. And so you ended up doing their work and everybody worked harder. And so therefore, very on in life, you found you've got to find people the same as you who pull their weight and be part of your team. So I moved on through there and being educated at the same time. But moving on into secondary school, I didn't know what I wanted to do. I didn't have a clue. Probably because the education was so rich. It was geography, history, science, languages. I could do them all, and I enjoyed them all. So I wasn't focused on anything in particular. So for me, at 16 years of age, after taking 11 CSEs and doing quite well at it, it was like, well, what are you going to do? I don't know. I haven't found that something yet. And I never found that something until I was 21 years of age, what I wanted to do. So then, family pressures, what are you going to do? You can't just go and get a job. And I was then pretty much forced back into staying at school. So I stayed at school and I did what the family wanted. They wanted me to get educated. Once I was educated, I made O-levels. That was it. Then it was university or do something else. So that was me. Right up until taking my O-levels, getting to 17 years of age, I didn't have a clue what I wanted to do. Nobody really steered me into, this is what you should do, that's what you should do, because it's make your own mind up, because this is going to be you for the rest of your life. But one thing that I did see was, I saw people going away, joining the army, coming back, taller, slimmer, broader, fit, being to all these places, and it was, China's over there, Russia's over there, he's being there, that, the world's getting smaller. And so, in the late 60s, early 70s,
I was saying to myself, the world's a small place. I love this geography business. I want to be out there. I want to be travelling. And so I looked for a job that travelled. And so I broke it to my parents. I want to join the army. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं।
So there we are. I broke the news. They don't like it. Their youngest son is going to join the army. Well, I was as educated as I was going to be without going to university, and off to the military I went. Left home, did some exams, went to London, passed my exams, well done you, and I ended up in the Royal Engineers. And well did I enjoy it. I could run. I'd done my milk round. I was used to getting up early. I suited military life, bang, from day one. I was a guy who got up early and was physical. I lived on a farm. Why not? Out there you went, doing the job, great. Soldiering, living in rough conditions, getting wet, I'd done that as a milk lad. Other guys who'd come from the city didn't do that. Guys who'd had the city of London hadn't experienced where I had, getting up early in the morning. They'd always just played football around the park. I'd played in the open air and on fields. So anyway, in the military, it was a case of I did very well. I passed out best student in my intake, and that was like, what are you going to do? Right, what are you going to do, South? Well, I like this parachute business. What? That will ruin your career. And then I did what was best, what I thought for me, not for the army. What was best for me? What was going to get it out of my skin was, I'm going to join the Up Paras. Wow. So I left one basic training as a Royal Engineers, done very well, and I went directly across into another set of training establishments and learned how to become a paratrooper. And that was very different. That was get in there, get in the ring, fighting, punching, working all hours. That was infantry. That was hard, it was aggressive, it was grueling. But the teams were tight. Everybody at the end of that training could trust the guy next to him. It was a bond. It was an airborne brotherhood. It was unbelievable how close people were, how much they knew about each other. Very different to the Royal Engineers, which is sometimes very academic. So I was there, and I went to my squadron, doing really well. We went to the Gambia, we went to West Africa. I worked there for months. Came home, I'd now been with the Paras a year and a half. It was great, loved it. And then I came back to the UK, and I was in a car crash. I was paralysed. I was lying in the local hospital here for 3 weeks, didn't move. And then it's, what are you going to do? I'm going to get up and go again. What? Do you realise what your condition is? You've got a depressed skull, you've got no feeling down one side. Goes, yeah, I know, I'll be up and at 'em. The mental attitude and the strength I'd been able to get from doing this military training and absorbing this discipline was like, I'm going to get up and go again. And within 3 to 4 weeks, I was back on my feet, walking, I had balance, done. And I went back to being a paratrooper, and it was like, what are you doing here? We can't use you. Well, what do you want to do with me? And as time went on and my skull flexed out, I got everything back, I got my feelings back, I was back to being me, I had the buzz. But I couldn't parachute. I was a penguin, I had wings on my arm, but I couldn't fly, I couldn't jump out of an airplane. I was useless to them. When one of the Sergeant Major turned and says, look, you're a good guy, we're not going to waste you, we're going to invest in you. And that was good. The army, after what I'd done, had seen what I put in, and we're going to give back. He says, we're going to send you to college for a year. So the army then sent me to college for a year, and I finished my apprenticeship. Done. Finishing my apprenticeship was a case of, right, I'm walking, talking, doing things, everything's back to normal. What am I going to do? And I had this thing where I want to prove it to myself I can still do it. And that was nagging in the back of my mind. And there's me, my red beret on, I'm really proud of it, proud as hell. And I say to these guys, and I'd getting to know them, and they were commandos. And I thought, yeah, we'll give that a go. So leaving college, it was like, where do you want to go? Go anywhere. I'll go to the Royal Marines. Yeah? What do you want to go there for? Well, I'll just go. So I left college and I was seconded to the Royal Marines. Off I went to the Royal Marines, turned up with the red beret on. It was, because they don't get on, and I loved it.
A lot of people got an easy ride around me because I had a red beret on. But at the end of the day, I passed the commando course. I did really well. And unbeknown to me, now the man next to me was my up-and-coming commanding officer. So I made this relationship with my up-and-coming commanding officer, and that then took me into the next stage of my career, unbeknown to me, simply by the performance I'd given under the conditions. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadhiya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलाची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. So, if we go back and look at it, it's a case of how do you achieve success? You're getting through the Royal Engineers, you're getting top recruit, you're getting through the Parachute Regiment, you're getting Pass Plus, you've joined the Royal Marines and you've done really, really well. And then you're being noticed and people are looking at it and you don't even know about it. And the answer is, you prepare. Proper planning and preparation prevent poor performance. And that's what you've got to do. It's not a case of going on the internet. You've got to experience things. You've got to get out and do it. So before I actually joined the army, when I was still at school, I went to the cadets because what did the army suit me? I went and had a look. I had a peek in the window. Is this for me or not? And I prepared myself for it so that when I joined, it wasn't such a big thing. So it's like, we done that, we got that far, we got into the army, and then to go to the Parachute Regiment, I was fit. So before I joined the Parachute Regiment, I was there, I was learning how to box in the gym, I was running, stamina was up, and I transferred one to the other, and those things that I'd picked up extra actually helped me on, because if you were physically fit, mentally, you weren't stressed. So because you kept your body fit and you could react, shrug things off, whether it be an injury or a knock, you were much better off. So being fit and keeping yourself alert in that manner means that mentally you don't crack. Because when you've got a rucksack on your back and somebody says, the end is here and it's 45 miles away or 63 kilometers away, the first thing a lot of people do is mentally go down. But if you're physically strong and you've prepared for it, break it up into stages. First 10 miles, second 10 miles, third 10 miles. I've done 3 quarters, you're mentally on the up, I'm nearly finished. So it's mentally preparing yourself for something is a huge part of actually getting across the hurdle in life, you know, and don't worry about it. Don't ever go to bed and worry about anything, because that achieved nothing. Nobody pays you for worrying. What you've got to do is just educate yourself to move on, not sit and worry about it. That's a waste of time. Educate yourself, go on. And education at the end of the day is the thing to do. But you've got to move your education and technology and global circumstances, I find, together. And that's what actually helped me in life, having a very open view on where you are and what you're doing.
and allowing yourself that freedom to change direction. I mean, I didn't want to go back to the Paras after really working hard to get in. I went somewhere else. Mentally, I wanted to prove it to me. I went and did it. And then, ticked that off. I'm as fit as I've ever been. And there was not carrying any baggage, no mental scars there. I can still do it. So, for every move I've actually made, there was a reason. It was substantiated why I went from A to B. And that's really what you've got to be able to do when you make things change in your life. So this is me signing off for this week. Terence South, ex-Special Forces engineer, and I would like to thank South Asia TV. Thank Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं,
काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक
इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। When I saw my father treating patients and the satisfaction that he used to get in treating patients who were disabled and suddenly making them walk, that gave me an inspiration as well. And that's where my mindset right from childhood was that I want to help people, I want to do something for the country. And that's where I became a doctor and then became an orthopedics and a trauma surgeon. And then wanted to learn more and see what the best things were happening in different centers in the world. So that's where I went out to do my AO fellowship from Canada and then fellowship in knee surgery from the United States of America, and where I got an opportunity to work with the guru of knee surgery in the world. And that was something, a patient, when somebody would come in and basically who could barely walk, making them walk again. A trauma patient coming in who was disabled and making them walk again was a great satisfaction. When I saw these patients lying on the road, and 95% chances were that nobody is going to help them. So that was the inspiration that I got from the med school when I was there, and we had done the first study that in case of an emergency, there were 95% chances you not get an ambulance. We kept working as a social work to do something about it. And we went and tried to revamp the existing organizations, revitalize them. But then when it all didn't work out, so it came to a stage where they said, either you do something about it, which meant that I had to leave my career, a good practice, my own family hospital, and which was actually a very, very difficult decision. My family thought I was crazy, I was mad, that I was thinking of leaving my practice. Where am I going to earn from? The biggest challenge that we faced when we were making rescue was changing minds. The mindset was, this can't be done in Pakistan, a developing country, a rescue service, and one number and people will immediately get help. So it was like as if I was talking some very strange words, and this was impossible in a developing country. The biggest challenge was we didn't have trained human resource. For the first time, we started the training of emergency medical technicians. Then the ambulances.
If we imported them, we couldn't maintain them. The repair and maintenance would have been necessary. So we had to start the fabrication of ambulances within Pakistan so that it was easy for repair and maintenance. Then we started it in October, so in 2004. And everybody was, it will not work out. We started with only 14 ambulances in the city of Lahore. A change of government is always a challenge. Whatever initiatives have been taken by the previous government, the new government looks at it from an apprehension and they want to start their own project. Initially, we did face a lot of resistance, and obviously we had to clarify all of those things. So the challenge and rescue go together. And when these people, even from the new government, who went there and said, my mother has been saved because of this, you can stop everything else done by the previous government, but not this service. So I think that became our biggest help, and our performance spoke for itself. Starting from the city of Lahore in 2004, and today, after 16 years, when I see what we've been able to achieve, even it's difficult for me to believe that. Where we started from 14 ambulances and then expanded to all the 36 districts of Punjab province with 110 million population, our fleet went up to 350 ambulances. And we kept it very cost effective, developing a response time based model rather than a population based model. So with minimal resources, we were able to extensively cover the area. When we saw the challenge of the increasing traffic, the congested areas, the walled city or the old city areas where it was very difficult for the ambulance to respond, we went into a motorbike ambulance service, and today the motorbike ambulance service has transformed everything, and we've been able to respond to over 600,000 calls up till now with an average response time of 4 minutes, which I think is comparable even internationally. And everybody, even when we were starting the motorbike ambulance service, was a lot of apprehension. This will not be successful, this is going to be a waste, and nobody could really believe that they could do it. And today, they are able to reach the most difficult areas, the most difficult, narrow streets, even in traffic congestion, they're able to respond to emergencies. They immediately go, they're all trained staff. In 2005, we had an earthquake in Pakistan, and we saw the helplessness of the people. And immediately, 1 year after that, we established our own disaster emergency response team. And then the team, we started building our teams and the capacity of that team. And we finally applied for UN certification in 2015 after we had met the basic requirements. And today, we are the first team, the search and rescue team, which got the UN certification from INSARAG in South Asia. But then we established a model fire service, a modern fire service from Lahore in 2007, and then this service has gradually expanded to all districts of Punjab. And today this fire service has responded to over 151,000 fire incidents and saved losses worth over 450 billion rupees. So I think that's just by improving the response and professional firefighting. Then came the floods 2010, which was a major event. And so it's like, so that was, we saw the helplessness over there. So we collected all the boats available with different organizations, so organized the service. And today we manage all the floods in the city, every year which come in the province. And today we've rescued over 200,000 victims, from different flood-prone areas or inundated areas. So this was a big change. After the successful launch of an emergency rescue service in Pakistan, I still always wanted to go back and help the people of this country. So my old patients and everybody else motivated me that I needed to give more time to this clinical practice. So I had to sacrifice my evenings for this. So I had to sacrifice my private life, and I dedicate 3 evenings at least in a week to come and help these poor and needy patients. Clinical practice is very important. It keeps you humane, because once you're involved in the entire day in the administrative affairs, managing such a large service, then coming and helping people in need is a lot of satisfaction. And I think if I can provide them with those services, I think that's the biggest satisfaction that I get, which no money can bring. Today I'm very pleased that a mission impossible of saving lives has been accomplished, and millions of people have been rescued without discrimination. But I hope that we can establish
safer communities to live, work, and travel in Pakistan. That's our vision for the next 10 years. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। जब से इलेक्शन हुआ है और मरीम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नारा लगाया है कि महंगाई कम हो चुकी है, और इस टाइम महंगाई कितनी कम हुई है इसके ऊपर बात करेंगे आज। महंगाई की शरह कम होकर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, ये गवर्नमेंट कहती है, पंजाब हुकूमत कहती है। मगर किसी भी आप होटल में चले जाएं, खाना खाएं वहाँ पे, तो आपको महंगाई कम नज़र नहीं आती। दाल की प्लेट अगर आप लेते हैं 200 से ऊपर रेट है, दाल की कीमत है वो। आगे बढ़ते हैं। सोने की कीमत में 5000 से ज़ायद का इजाफा, फ़ी तोला कीमत आवाम की पहुँच से दूर हो गई। हुकूमत ने बस नारे ही नारे हैं, खोखले नारे हुकूमत के। इसके ऊपर ही बात करेंगे। सोने की कीमत आसमान के ऊपर है। अब शादियों का सीज़न है और ख़ानदान बेचारा क्या करेगा। 1 साल के दौरान कर्ज 8.34 खरब रुपए बढ़ गया। वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इतना कर्ज लिया, 8.34 खरब रुपए लिया। चीनी की कीमतों को पर लग गए। 1 हफ्ते में 4 रुपए फ़ी किलो मज़ीद महंगी हो गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मरकज़ी सदर किराना स्टोर लाहौर ताहिर भट्ट साहब। इनसे आज बात करेंगे। ताजिर हैं, मार्केट में बैठते हैं और ताजरों की आवाज़ बनते हैं। और ताजिर किस हुकूमत में खुश थे और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने ताजरों को फ़ायदा पहुंचाया। तो अब जो हालात बने हुए हैं, मुल्क की मैशत आप देख लें कहाँ पे है, महंगाई कहाँ पे है, ताजिर इस टाइम किस तरह जी रहा है और मार्केट ताजरों की कैसे चल रही है लाहौर की। तो आज ताजिर से बात करते हैं। मरकज़ी सदर हैं लाहौर के। सर, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? सबसे पहले बात करते हैं चीनी की, जो 1 हफ्ते में 4 रुपए इजाफा हुआ है और आगे भी चीनी बढ़ेगी, कीमतें बढ़ चुकी हैं। गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई 2 माह पहले मैंने चीनी का ये जो सिग्नल था दे दिया था। मैंने कहा कि ये चंद सट्टेबाज लोग जो चीनी की मूवमेंट बनाएंगे। 2 माह पहले मैंने एक प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने कह दिया था चीनी जब इन्होंने एक्सपोर्ट करनी थी ना, ये मिल वालों ने और दूसरे एक्सपोर्टरों ने, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से वादा किया था हम चीनी का रेट नहीं बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि चीनी का रेट नहीं बढ़ाएंगे। हाँ जी, इन्होंने ये एक्सपोर्टर ने वादा किया था कि 1.5 लाख टन चीनी आप एक्सपोर्ट कर दें। यानी कि ताजरों ने यानी कि वादा किया था शहबाज शरीफ से कि ताजरों ने किया। हाँ, एक्सपोर्टर ने किया था। एक्सपोर्टर ने किया जी, और मिल वालों ने कि चीनी हमारे पास सरप्लस है, हम अगर 1.5 लाख टन चीनी बेच देंगे तो इसमें इशू कोई नहीं आएगा, रेट वहीं रहेगा। हाँ, ये वादा किया था उन्होंने। ठीक है। हमारी समझ के बाद है ये 5वीं एक्सरसाइज हुई है पाकिस्तान में चीनी की एक्सपोर्ट करने के बाद जो बढ़ती है चीनी। हम कहते हैं कि अगर चीनी सरप्लस है तो उसे कम किया जाए ताकि गरीब आदमी जो चीनी जिसका दारोमदार चीनी आटा घी पे है उसको फायदा हो। बिल्कुल। चीनी ये 2 माह में इन्होंने जो है ना ब्रोकरों ने और मिल वालों ने सट्टा खेला, जिसकी वजह से चीनी तेज हो गई। हम बारहा पॉइंट आउट किया जनाब ये देखें चीनी बढ़ रही है, इन्हें रोकें। प्रॉब्लम ये आती है जब चीनी का रेट बढ़ता ना तो इंतजामिया जो लोकल होती है ना जिलों की, वो नीचे जो छोटा दुकानदार होता है जो 1 बैग का खरीदार होता है या 2 बैग लेता है उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। अभी तो आपने चीनी क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है। मकसद सिर्फ यही है कहने का, अगर आपने ये जो वायलेशन होती है तो जब 30-40 रुपए किलो बढ़ जाती है उसी वक्त इंतजामिया हरकत में आती है। ये मेरी समझ से बाहर है। आप जब हम डंडोरा पीट रहे थे पूरे पंजाब में कि चीनी बढ़ रही है रोको, चीनी बढ़ रही है रोको, अब तकरीबन 25 रुपए किलो बढ़ गई हुई है। 25 रुपए किलो चीनी बढ़ गई। चीनी का पहले जो रेट था पुराना, क्या रेट था उस टाइम भट्ट साहब? हमने जो चीनी का लगाया ना अपने बड़े स्टोरों पे 128 रुपए किलो। अभी भी LOS रोड पे चले जाए, मालदीन स्टोर है हमारा। हाँ। जो उधर अब भी 128 वो लगा हुआ है। यानी कि आप पुराने रेट के ऊपर आप दे रहे हैं। आप मैं निशानी बता रहा हूँ, अब तो रेट बढ़ गया ना। हमने जब 136 रुपए DC साहब ने रेट दिया था ना लाहौर में, हमने 128 रुपए लगाया था बड़े स्टोरों पे ताकि लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये 2 माह हो गया चीनी का। अब मुझे
जो मुझे जो अलार्मिंग क्या कहते हैं, मुझे जो फीलिंग हो रही है ना, वो ये हो रही है कि रोजों में चीनी इन्होंने 170 रुपए ले जानी है। ठीक है, 170 रुपए मुझे डारा ले जानी है इन्होंने। अब भी खामोशी चाहिए थोड़ी सी। अभी का जो रेट है वो क्या चल रहा है? आपने जैसे बताया कि 25 रुपए जो इजाफा हुआ है और पुराना रेट 128 था, अब 25 हुआ तो कितने हो गए? आप देखें ना 150 रेट, आप 150 होलसेल का बता, होलसेल ठीक है। रिटेल में 155 बिकेगी, जाहिर बात है। तो देख लेना 128 तो 155, वो तकरीबन 27 रुपए किलो बढ़ गया। हाँ। तकरीबन इतना ही आता इतना ही बढ़ता है, बिल्कुल। ये 27 रुपए किलो बढ़ गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वजीर आज़म साहब से जो इन्होंने वादा किया था, वजीर आज़म साहब एक्शन ले कि भाई ये क्यों बढ़ा चीनी, आपने को तो कह रहे हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो अब आपने क्यों बढ़ा दी है। हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि कम से कम जो सबसे नीचे तो दुकानदार छोटा होता ना, उस पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता। अच्छा सर देखें, दुकानदार भी कसूरवार है। अगर एक तरफ से देखा जाए, कहते हैं ना कि ताली जो बजती है ना वो दोनों हाथों से बजती है, सिंगल से नहीं बजती है। ऐसा ही है, ठीक कह रहा हूँ। अगर मैं कभी गलत हो तो आप मेरी दुरुस्ती कीजिएगा। ठीक है। ताजिर को पता होता है कि जी चीनी का रेट आगे बढ़ना है, ताजिर अपनी जो सारा कुछ होता है स्टॉक कर लेता है, जब चीनी का मरला आगे आता है तो शुरू कर देता है सेल करना, वो रेट बढ़ जाते हैं। फिर बिल्कुल राइट है। जो ताजिर जो चीनी खरीदी होती है, ठीक है, वो कम रेट पे खरीदी होती है, जब वो फरोख्त कर रहा होता है तो ज्यादा रेट के ऊपर कर रहा होता है। ताजिर भी इसमें एक मुलविस है मेरे ख्याल। हाँ 10-20% हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पर मकसद ये है कि कारोबार जो है ना, सिस्टम है पाकिस्तान में, हमने तो 136 वाली 128 हाँ मार्केट में सेल करवाई अपने दुकानदारों से। वो क्योंकि वो इफ्तिताह भी किया था, सलमा भट्ट साहब हैं हमारी प्राइस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया था, हमने 128 उनके हाथों से वो करवाया था सब कुछ। हम कहते हैं कि ताजर जो है ना, जो हमारी यूनियन है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि भाई मेरे ऊपर पकड़ो। देखें जब आप ऊपर से एक बंदे को पकड़ेंगे ना, भारी बंदे को, तो नीचे जो छोटी छोटी हमारी जैसी छोटी छोटी मछलियां होगी, खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेंगी कि बचो यार ऊपर इन्होंने तो सर ऊपर किसको पकड़े हैं भट्ट साहब? कौन है जो हाथ डालेगा ऊपर? बहुत बड़ा माफिया ये तो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डाले। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान हाथ डालेगी माफिया को? अगर माफिया को पहले हाथ डालती तो आज की ये सूरत हाल ना होती पाकिस्तान में। देखे बात सुने, रियासत जो है ना, रियासत से ताकतवर कोई इंसान नहीं है। अगर रियासत अपनी ताकत दिखाएगी, ये एक्सरसाइज 1.5-2 साल पहले भी हुई है। 200 रुपये चीनी जब गई है तो फिर 130-32 रुपये चीनी आई है, 28 रुपये भी आई है, 126 रुपये भी नीचे आई है चीनी। तो रियासत अपना जब किरदार दिखाती है ना, तो हर चीज को वो कंट्रोल कर लेती है। देखे ना, रियासत अपना किरदार कब दिखाएगी? जब अवाम मर जाएगी। अवाम ऑलरेडी पहले दिखाना चाहिए ना। वही मैं कह रहा हूँ ना। देखें आपने बताया कि एक हफ्ते में 4 रुपए इजाफा हुआ, फिर आगे इकट्ठा ही 25 रुपए इकट्ठा इजाफा हुआ। ठीक है, अवाम फिर तो गवर्नमेंट सोई हुई, पता ही नहीं इनको क्या हो रहा है। फिर तो नहीं जागना चाहिए ना। देखिए ये पब्लिक का मामला है, ये फिर कौन जगाएगा? ताजरों का काम है जगाना ना। फिर तो जगा तो रहे हैं हम लोग, अब कैसे करें? हम 2 माह पहले ही अपना वो ढोल बजा रहे हैं, भाई पकड़ लो इन्हें, पकड़ लो इन्हें। तो अब हम तो जितनी हमारी ताकत है हम वो तो कर रहे हैं, उसका सद्देबाप तो कर रहे हैं जितनी हमारी ताकत है। अभी आपने ये व्हाट्सएप कहा कि अब रमजान आगे स्टार्ट होने वाला खैर से, और 70 रुपए तक ये चीनी बिल्कुल 170 में। इसकी क्या वजह है इसकी? ये तो कम होनी चाहिए थी, रमजान में पैकेज देना चाहिए था फिर तो। नहीं अभी तो आपने खुद ही कहा है कि कौन पकड़ेगा। हाँ तो हम जो आगे जो खतरा है ना, वो मैं बता रहा हूँ 170 रुपये है। तो आप क्योंकि लोगों की वजह से हम लोग की आवाज़ ऊपर जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है। तो पहले प्रिंट मीडिया था, अब डिजिटल मीडिया हो गया, तो इसलिए हमारा जो आवाज़ आप लोगों ने आगे करनी है ना, तो वो तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हमारा फर्ज ये है हम बताना कि देखें ये चीज़ का रेट बढ़ रहा है, इन्हें पकड़े। अब घी है वो भी यही पोजीशन है, वो नीचे नहीं कर रहे। क्यों नहीं नीचे कर रहे? ये गवर्नमेंट को चाहिए ना। जब घी वाले जब रेट बढ़ता था मार्केट में, आलमी मंडी में, तो इधर 10 रुपए किलो पड़ जाता था। अब रेट नीचे आ रहा है, ये कम से कम अब तो नीचे करे ना। तो इनका जो पूल है वो तोड़ना चाहिए गवर्नमेंट को, इन्हें बुला के इन्हें कहा भी ये रमजान वाला रेट ये होना चाहिए। अगर चीनी की जगह भट्ट साहब गुड़ इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में
बचत हो ही जाएगी आवाम की। नहीं, हमारी इतनी एजुकेशन नहीं है हमारी पब्लिक की। 80% लोग अनपढ़ हैं, वो कैसे समझाएंगे? वो कहते हैं हमने खानी चीनी है भाई। ये तो होता है कि वो आप ये छोटे छोटे इदारे होने चाहिए जहाँ वो क्या कहते हैं एजुकेट करना चाहिए लोगों को। जैसे आप हैं, टीवी चैनल वाले हैं, ये बताएं यार गुड़ इस्तेमाल करो, ये करो। एक तो वो सस्ता है, तो 100 में 80 90 200 रुपए किलो है, तो वो इस्तेमाल भी थोड़ा होता है। तो हाँ, थोड़ा सा डालें, सारी चाय नमकीन सॉरी मीठी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। चीनी के तब 5 चम्मच डालेंगे तब जाके मीठा असल होता है। चीनी शुगर उसकी ना, शुगर केन की नहीं ना, ये तो मुख्तलिफ चीज़ों की बनती है ना। चीनी चुकंदर की बना लेते हैं, और ये जो क्या कहते हैं ये शलजम है उसकी बना लेते हैं चीनी। मुख्तलिफ चीज़ों की बनाते हैं ये। आपका भी गवर्नमेंट से ताल्लुक है, आप बता रहे थे कि चेयरमैन भी हैं अपने इलाके के। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आप आगे आवाज़ क्यों नहीं पहुंचाते। ब्रेक का टाइम है, बट साहब नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हेड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हेड सुलेमान की हवेली लखा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चीनी और गुड़ की। अगर आवाम गुड़ इस्तेमाल करे तो बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट साहब, आप भी चेयरमैन हैं अपने इलाके के और आपका ताल्लुक भी जो है वो नून लीग से ही है और आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठते रहते हैं सबके साथ, तो आप आगे बात क्यों नहीं बढ़ाते इनके साथ? क्यों नहीं कहते कि यार तेरी महंगाई है, अवाम मर रही है, तो थोड़ा सा रहम करे अवाम के ऊपर? देखिए, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। जो सीएम हमारी मरियम नवाज है ना, इन्होंने देखे पार्टी से हट के बंदे, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो सीएम पंजाब है, उन्हें 2-4 जो फैसले किए ना हमारे लिए बहुत अच्छे किए हैं, ताजरों के लिए। मसलन कौन से? हाँ, मसलन मैं बताता हूँ। पहले जो इंतजामिया थी ना, डीसी वगैरह, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वगैरह, इन्होंने समझे कि बहुत ही इन्होंने ज्यादतियाँ करते थे हमारे दुकानदारों से। हमने जो सलमा भट्ट साहब हैं उनको कहा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइस की, उनको हमने रिटर्न में लिख के दिया कि ये देखें ये बहुत बुरा। उन्होंने आगे हमारी आवाज़ पहुँचाई है। उसमें कमिश्नर लाहौर है, उसमें डीसी साहब हैं, डीसी साहब थे उन्होंने, तो इन लोगों ने हमारी ऊपर आवाज़ पहुँचाई। अब क्योंकि उन्होंने बना दिया है कि पीसीएम जो है ना, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है ना, वो अपना डाल के आएगा कार्ड, ठीक है, शॉपों पे आएगा। वो नई ऐप जो इन्होंने बनाई है वो अब आ रही है कि वो उधर से वो क्लिक करेगा दुकान का नाम, तो पीछे उसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये आगे दुकान के इधर खड़ा है। बस ये इन्होंने ऊपर से मरियम साहिबा ने जो ये किया ना अपना, कि कोई मजिस्ट्रेट फेक बंदा आए उसके खिलाफ आप FIR दे। सर ठीक है आपकी बात, मैं आपकी बात से इत्तेफाक उधर ही करता आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, बोले आप बोले। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो इंक्रोचमेंट के उन्होंने फैसला किया है ना, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा फैसला नहीं हुआ था। ना हमारे वो जो काम किया मजिस्ट्रेट साहिबान का, तो दूसरा इंक्रोचमेंट का। तीसरा मैं आपकी बात पे आऊँगा, क्योंकि पहले मैंने वो ग्राउंड बनाई है ना, अब मैं आ गए। मेरी जो सीएम पंजाब है ना, मरियम साहब से, ये ले सकती हैं एक्शन महंगाई के खिलाफ। ठीक है, वो इस तरह क्यों इनके आगे नहीं बोलता। माशाल्लाह ये दबंग है। इंक्रोचमेंट देखे पूरे पंजाब में हो रही है, किसी की जरूरत नहीं है। सर वो ठीक है, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ से नारा लगाया जाता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, उठाया जाए। इस बात से माजरत, इस बात से मैं आपसे जो है क्रॉस करूंगा। बात यह है कि हम लोग ठीक नहीं है, पब्लिक। सबसे पहले मेरी एक राय है छोटी सी, कि अगर सीएम साहिबा इन्हें पकड़े, कभी आपको ये किसने लगवा के दिया है ये स्टॉल आगे, वो कहेगा जी ये LDA के बंदे ने या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन अफसरों को उठाया जाए, उन अफसरों को उठाया जाए, उन्हें पनिश दी जाए कि भाई तुमने किस हिसाब से 10 साल से इसका लगाया हुआ है। अब देखें वो 10 साल से काम कर रहा है। एक उसने सब्जी का स्टॉल लगाया या गोश्त का लगाया हुआ है, 10-20 साल से काम कर रहा है। उससे या तो मुतबादल दे दिया जाए, तब या तो वो जो महकमे का अफसर है जो उससे रिश्वत खाता था हर माह, उसकी जगह उसे लगा दें। फिर ऐसे कर लेना, फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसके बच्चे हैं, उसने कमेटी डाली है, बच्ची की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, उसने घर लेना है या किराए पे रह रहा, उसका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। मेरी सिर्फ सीएम साहिबा से यही रिक्वेस्ट है कि आपने माशाल्लाह इतने बड़े फैसले किए हैं, ये छोटा सा एक फैसला और क्या, जैसे आप ये रेडियाँ दे रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, रोजगार खत्म तो नहीं किया। वो 3 महकमों से जान छूट गई है रेडी वालों के, LDA से, कॉरपोरेशन से, और वो दूसरा जो होते हैं एजेंसियां फिरती हैं छोटी मोटी नहीं होती, पुलिस वालों से। वो तो सारे पैसे ही लेते हैं ना। नहीं, अब नहीं देंगे उनको, यही तो मैं बता रहा हूँ सर। लेकिन अगर उनसे वहां से उठाया जा रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ, हर मार्केट से उठाते हैं, जब वो सारे चले जाते हैं फिर वो दुकानदार वही होते हैं, फिर वही रेडी होती है, आके लगा देते हैं रोड के ऊपर आके। तो फिर मेरा ख्याल है फिर वो जो है ना, अब देखे मरियम साहिबा को कोई कसूर तो है ही नहीं है। उन्होंने तो एक कसूर सिर्फ ये है कि जब आप एक मार्केट से चीजें उठाते हैं उनको दूसरी जगह दी जाए। यहाँ पे आप बैठे, ठीक है, ये आपकी जगह है, रेडी, ये रेडी है, ठीक है, ये दुकान है, अलग अलग जगह, ठीक है। अब छोटे शहरों में मैंने देखा है रेडी वालों को अलग जगह दी गई है, जो छोटे शहर हैं। लाहौर में भी ऐसा हो सकता है, अलग जगह दे दें आप उनको, इतनी जगह पड़ी हुई है। आप चुबुर्जी देख ले, हाँ, गुलशरा भी देख ले, शादमान देख ले,
और इधर ठोकर में देख रहे हैं रेडियां दी है उन्होंने। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें 3 महकमे खत्म हो जाएंगे, वो उनकी रिश्वत मुक जाएगी। ये सीएम साहिबा ने जो काम कर रही है ना, अब देखे ना सीएम साहब ने टोन तो नहीं देखना ना, वो जो अफसर हैं जो उन्होंने बिठाए हुए हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं या डीसी साहिबा साहब हैं या वो टाउन के वो जो हैं हेड, उन्हें चाहिए ना आगे इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अब मरियम साहब ने तो ऑर्डर दे दिया कि भाई इनको रेडियो दे दे, वो मिल गई, काम तो हो रहा है, पर मकसद ये है कि आगे इम्प्लीमेंट उन्होंने नहीं करवाना, उन्होंने करवाना अफसरों ने। ठीक है भट्ट साहब, आपने जिक्र किया महंगाई का कि बड़ी काम कर रही है मरियम नवाज साहिबा, ये कर रही है वो कर रही है। महंगाई की शरह कम और का 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, और आप समझते हैं कि महंगाई कम हुई है? कभी होटल पे खाना खाया? वैसे घर से तो खा के आती होंगी, कभी होटल पे बैठने का इत्तेफाक हुआ है आपका? और दाल का रेट क्या है? देखें, ये मैं पॉइंट आउट कर दूं आपको, ये जो हमारे चुबुर्जी में है एक खान बाबा है, उनकी दाल का रेट 1000 रुपये है। 1000 रुपए की प्लेट देसी घी की? देसी घी की। आप समझते हैं वो देसी घी होगा? हाँ जी, वो एक क्लास है, ब्रांडेड है बंदा। तो जो साइडों पे है, आप दाल की प्लेट को चने ले लें आप, वो 350 रुपए की प्लेट है। तो फिर आपकी तो मरियम नवाज साहब झूठी है फिर तो? नहीं 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 नहीं, ये देखे मेरी बात सुने, ये तो इंतजामिया को चाहिए ना रेट लिस्ट से होटल वालों को, यार इस रेट पे आप बेचे। अब देखे ना, बोतल एक पानी की है बाजार से मिल रही है 50 रुपए की या 70 रुपए की बड़ी बोतल, तो होटल में हमें मिल रही है 150 रुपए की। तो वो इंतजामिया को चाहिए ना, उन्हें लिस्ट दे, रेट लिस्ट दे ना उनको। तो ताजिर को किन मुश्किलात का सामना? फिर जब मार्केट में बैठते हैं, कस्टमर आता है, जाहिर सी बात है फिर बहस भी होती है, वो कहते हैं इतने की चीज़ नहीं थी, आज इतने की चीज़ है, तो आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अब मैं बताता हूँ आपको, ये 1-2 माह से जो इन्होंने गोडाउन चेक किए ना होलसेलरों के, उसकी वजह से जो इजनास है ना, जैसे दाल चना है, हाँ, ये नीचे आई है, माशतुली वो नीचे आई है, मसूर की दाल वो नीचे आई है। मेरा सिर्फ यही है कि आप जो रमज़ान आ रहा है ना, इसमें एक आप सर्कल लगा दें, भाई इसके ऊपर रेट नहीं किसी ने बेचना, होलसेलर को पाबंद कर दें। अगर होलसेलर इस रेट पे नहीं देगा, होलसेलर मार्केट को पकड़े और उनका रिकॉर्ड ले कि भाई तेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है, 200 तोड़ा है, 2 लाख तोड़ा है, 3 लाख तोड़ा, हाँ मैं इस रेट पे माल चाहिए। अगर ये मरियम साहब करवा देना कि मसलन बड़े बड़े जो होलसेलर हैं, इंपोर्टर हैं, उनका गोदाम चेक कर लें बस। तो समझते हैं कि करेंगे चेक ये? हाँ करवाएंगे, ये मरियम करवाएंगी, हमें उम्मीद है इस पे बहुत ज्यादा। इन्होंने एक ये हमारे मुल्क में एक ये भी अलमिया है ना कि जब टीम जा रही होती पहले फोन हो जाता है कि सर आप साइड पे हो जाएं, बंद करके साइड पे हो जाएं, आप अगले बंदा पहले होशियार हो जाता है। नहीं, जब घंटी आप पहले ही कर देंगे तो अगले बंदे का क्या फायदा होगा? नहीं, ये हमारी 3-4-5 एजेंसी हैं जो काम करती हैं इस पे, तो वो उन्हें पता होता है कि वो जो मर्जी कर लें। अगर इन्होंने रोजों में रेट को जो ना वो सर्कल लगा दे, भाई ब्रेकर है इस पे ऊपर नहीं जाना चाहिए, होलसेल का रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे मार्केट अकबरी मंडी है, फैसलाबाद है, सरगोदा है, तो कराची है, वो तो बाहर है, हमारा पाकिस्तान वो सूबे से बाहर है ना। पंजाब में ये जब बहुत होलसेलर बड़े बड़े बैठे हैं, उनके रिकॉर्ड आ जाएंगे कि इसके पास 2000 बोरी है सफ़ेद चने की, उसके बाद 10 लाख बोरी है चने की, काले की, क्योंकि काले चने से आगे बनता है दाल चना और बेसन। ये अगर रिकॉर्ड ले लें, रिकॉर्ड के मुताबिक हर हफ्ते दुकानदार अपना रिकॉर्ड देगा तो महंगाई पकड़ी जाएगी। अदरवाइज ये देखें ना, अब दाल है 10,200 पे रेट आई है, अब 800 रुपये हो गया। ये चीजें मैं कहना पकड़नी चाहिए। अब दाल जो है आपने बताया कि 800 रुपए किलो, क्या रेट है इसका? अब दाल का रेट है तकरीबन होलसेल में 265 रुपये। 265 रुपये। और आप अब होटल पे जाएं, आपने बताया कि 1000 रुपए की प्लेट बिक रही है इस टाइम। बिल्कुल 265 रुपए ये होलसेल रेट है। वो दाल चना मटन की बता रहा हूँ मैं। मटन की बता रहे हैं? हाँ, उसमें वो उसने बनाई होती है मटन। तो वैसे क्या दाल का रेट है नॉर्मल? वैसे तो 200 रुपए की मिल जाती है आम जो अपना दरून शहरों में। हाँ, 200 रुपए की जब मिलती है, 200 रुपए के पीछे से किलो आ रही है, तो उसमें क्या
बनने का फिर? नहीं तो आप ये चिकन देख ले, चिकन 550 रेट है, तो होटलों में 2200-2300 रुपए किलो खाते हैं कि नहीं खाते? वो तो हमजा शहबाज का ही रेट है सारा। तो नहीं, हमजा शहबाज नहीं, अब कई आ गए हैं लोग इस काम में, वो अकेला वो तो नहीं है, कई आ गए हैं बंदे। ज्यादा सप्लाई तो इनकी ही होती है ना? नहीं, ये तो ऐसे वो आप और मैं जो मर्जी कह दूं, आप जो मर्जी कह दे, ये नहीं होता। हकीकत जो है ना, वो लोगों ने बहुत बहुत बड़े इसके ना लगा लिए हैं अपना चिकन के ना, बहुत बहुत बड़े। ठीक है, अच्छा भट्ट साहब बात आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। महंगाई का जमाना है, जो ताजिर है, आप लोग हैं, आप लोग कितना मुतासर हो रहे हैं इस टाइम महंगाई की वजह से? ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, 5000 रुपए, शादियों का सीजन है, ठीक है, तो कैसे लोग जी रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadhiya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. वेलकम बैक। नाज़रीन
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, और इतना जो दौर चल रहा है इस टाइम महंगाई का, ताजर कितना मुतासिर हुआ है। भट्ट साहब, ये इस दौर में, महंगाई के दौर में ताजर जो है वो कितना मुतासिर हुआ है? आप लोग कितने मुतासिर हुए? बड़ी मार्केटों में आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को कितना बोझ पड़ा इसके ऊपर आ गया? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है जी आपने। ये कोई 5-6 साल से हम ताजर हम पिस रहे हैं। पहले अगर कोई चीज़ हम लेते थे ना, एक मिसाल है रूह अफ़ज़ा की ले लें, पेटी, वो हम बेचते थे 1200-1300 की, अब उसका रेट हो गया 5,000 रुपये। इतना बड़ा। तो वो जो हमारी कैपेसिटी थी ना, हम जब 50 पेटी ले लेते, अब आ गए हैं 10 पेटी के ऊपर। पैसे नहीं है, क्या करें, कहाँ से लाएं पैसे? प्रॉफिट हमारा वही है। वो 25-30 रुपये लेस करते हैं लोगों को, एक बोतल वाले को, 2 बोतलों वाले को। मुतासर ताजर इतना मुतासर हो गया है, खासकर रिटेलर हो से, उनकी जो है ना रास वो खाती जाए, वो खुद ही खा रहे हैं, प्रॉफिट है नहीं। वो जब लेते 2 पेटियाँ वो लेते थे, अब आ गए दर्जनों पे आ गए, 1 दर्जन 2 दर्जन साबुन वगैरह, वो दुकानें लोग छोड़ रहे हैं। सर, ताजर जब दुकानें छोड़ेंगे तो आप कहते हैं ना कि पंजाबी च कहते हैं कि ना ताजर रीढ़ दी हड्डी होती है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो जब आप लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर कैसे ये निज़ाम चलेगा पाकिस्तान का? अब पाकिस्तान का निज़ाम अल्लाह की मेहरबानी चल ही रहा है। बहरहाल जो ग्रॉस रूट पे छोटा ताजर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत मुतासर हो गया, बहुत ही मुतासर। देखे ना, पहले 1 लाख से दुकान वो बढ़ लेता था अपनी, आज उसका पोजीशन ये है, वो 5-6 लाख भी हो ना, नहीं बढ़ सकता। ये क्योंकि ये 5-6 साल से महंगाई तेज हुई है, ये आज नहीं हुई, ये 5-6 साल से जब 120 से डॉलर गया 180-85 रुपये, अब 285 या 82-83 रेट चल रहा है डॉलर का। महंगाई तभी नीचे आएगी, तभी लोग खुश होंगे जब डॉलर 200 तोड़ेगा बस। यानी कि डॉलर तो अभी भी आसमान के ऊपर है, क्योंकि उस देखें हमारी बहुत सी चीज़ें बाहर से आती हैं, खाने पीने की, ऑयल आता है, इजनास आती हैं, बहुत सी ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक सहूलत है हमारे लोगों की, आम बंदे की। दाल है, चावल है, चावल हमारा पाकिस्तान का है, पर वो भी महंगा है। सिर्फ ये है कि ये सब महंगाई का ये जो है ना, ये बातें ही हैं। जब डॉलर नीचे टूटेगा ना 200 रुपया, तो फिर इंशाअल्लाह ताला तेल भी नीचे आएगा, खुर्दनी तेल, आपकी ये जनास भी नीचे आएंगी। तो ये तो जब माल ज़्यादा आ जाते हैं या फसल हमारी इधर अच्छी क्रॉप होती है तो फिर रेट कम होते हैं। यही बात है, बड़ी क्रॉप होगी चावल की या दाल की, तो काले चने या सफ़ेद चने। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने भट्ट साहब की बातें सुनी और एक ही मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से, मरीम नवाज़ से, कि महंगाई के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, महंगाई को कम करें, जो गरीब आवाम है उनको सहूलत दें। और शहबाज शरीफ साहब से भी मुतालबा कर रहे हैं कि आप भी महंगाई के ऊपर तवज्जो दें, आवाम को सोलहात दें, क्योंकि इलेक्शन से पहले आप लोगों ने कहा था कि आवाम को सोलहात देंगे, और अभी तक आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो नाज़रीन, ये मुतालबा कर रहे हैं भट्ट साहब। और चीनी के रेट आपको पता है, भट्ट साहब ने दोबारा बता दी है कि चीनी का जो रेट है अब और बढ़ेगा और 70 रुपये तक आगे चीनी बढ़ेगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं
काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए में। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबारे को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show,
Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, bahut vadhiya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power with Dr. Anand. Today, I'll tell you a little bit about my story as someone from South Asia who is an immigrant. Well, I'm not the first immigrant. People have been coming to this country from ages. There were Celtics, there were Anglos, there were Saxons. That's why this country is called Anglo-Saxon. Then there was wars, so people came in when they were needed after Second World War. Then there was issues about that. And now this country is bringing in people who are talented, such as doctors or engineers or chefs, specialists. I myself have brought in 3 people time and again to teach music in this area, because that is what's special about our subcontinent. The arts and the culture is ancient. On all the 3-4 countries, we really value our culture. But I am here also to tell you about how to fit in with this country and make a success of it. It's about you. When you come here, how do you make it possible for you, your wife, your children to be happy and successful, to break out of their shells, to merge and interact with the local community, because ultimately it's about communication. So there are many barriers that are with us when we come here. We wear different clothes. The cold is here. You have to drive on the left side of the road. There are lots of rules and regulations. Because in the subcontinent, many things we allow. Here things are much more controlled and disciplined. So we will talk about those things as well. But generally life is good. Otherwise, why would I be, after retiring, still sitting in this country? I could easily go back to the subcontinent and had a very wonderful life with lots of food, lots of servants, lots of this, lots of that. But I'm here. I enjoy here. I've chosen to be here. So this part is about immigration. When people come into this country or any other country, it could be anywhere else. You could be working in Finland, you can be working in China, you can be working from North India to South India, you can be working from Sindh to Lahore, you can be working from Dhaka to Sylhet. It doesn't matter. Once you move even a few miles, you uproot yourself. So immigration has a lot of challenges and a lot of things have to be learned about the new places: culture, language, clothes, rules and regulation, what is okay, what is not okay. In many cultures, some things are perfectly fine, some way of addressing people is fine, and some ways are not. For instance, if you're in Mumbai and you say, "Ch-ch," the waiter comes, no problem. Don't try it anywhere else, because people get offended. They say, "Am I your servant?"
people get very offended. Neither is right, neither is wrong. It's about what is the prevalent culture. You're not come here to change England. You come and see what it is like. And if you want to be happy here, you in particular, then you have to learn a few tricks of the trade. And that's what the first part is about, is to tell you how to be happy in a new environment. To me, it's a little bit like a bride in a patriarchal society going to her in-laws' place. At first, she's very shy. She listens to her mother-in-law, she listens to her father-in-law, and bit by bit, as she is liked and loved, then the mother-in-law will ask, how do you make parathes in your house? How do you make tea in your place? What's special? But don't go and impose, because you have come because you wanted to come. This country wasn't begging for you, and you came by choice. You worked very hard to get here. So if you have a little humility in the beginning and reach out, and people will then obviously like you. I, having been in this country 45 years, speak my mind openly, and nobody minds because they know me for 2 generations. Having been a doctor, a lot of people know me, and now I'm in the public life as a politician, and that's even more exposure. But things don't upset me. Even if somebody is rude to me, I just smile, say, thank you very much, and walk on, because that's what English politicians do. You don't take an affront, you don't take an umbrage, you don't get angry. So the first thing about being an immigrant is you chose to come and be happy here. And if it's not good here, find a place where you're happy, find a job you're happy, etc., etc., etc. So today the issue is about immigration to a new country. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting. Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं।
शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबारे को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Let me tell you my own story first. My cousin Ashit Sinha, late Ashit Sinha, he came to my hometown, to my mother country and said, jaldi kijiye, England chaliye, which means be quick, come to England. I said, I will, but I've just finished medicine. I've just got married and my wife is pregnant as well. What do you want me there for? He says, the party is coming who hates foreigners. Then I said, why should I come? He said, because you can come in before that party comes. And how interesting it is that I am a very strong activist, the only strong activist in the Northeast for that party. So things change, things improve. And why it has improved is obviously because of language and because I'm accepted by the community. So I want you to also come here and be loved and liked. Most of us come here for cash, money. So when I was asked at my interview, why did you come here? I said, to have a better standard of living, which is like saying money. I wanted my children to have better education without going to a private school in India. Money.
So most of it is to do with economic migration. I did not run away from my mother country. I came here positively. Some people unfortunately have to come because things are hard where they are. But most of us, 99%, 95%, come because life is better here. And because this country ruled our part of the world, there's a connection. There often happens that connection. Who's the master, who's the slave is forgotten very soon. You learn speak English because the English people were there. I mean, I couldn't go to France and start. I couldn't go to Portugal. So England was the natural place. I happened to have a medical degree and I came. And very soon I realized that this country runs on rules. People just drive on the left side of the road. If it's 2 o'clock in the morning and there's no traffic, and if the red light comes on, you stop. Initially, I used to fall foul of it. I used to think, well, it's 2 in the morning, nothing's coming, there's no beams coming across, let's go across. But then I got caught and I got fines, speeding fines. And very soon I learned that if you stay within the rules, life is very easy. A lesson for you, stay within the rules. A lot of our people, or quite few I know, just do a little bit of fraud, a little bit. Now, systems are there to catch you. The English people are quite gentle. The first time they let you go. They know what's going on, they let you do it. And they let you do it. But one day, the trap will shut and you'll be either in jail or living abroad, or your names at least will be in the headlines. And that's not good, is it? I mean, from the minority community, if you're coming from the subcontinent, from our own South Asia, it's very bad when the paper prints so-and-so and you feel part of it. Doesn't matter how long I live here, I still feel part of that community. So if somebody's bad name comes, I feel bad because each of us is an ambassador to this country. So remember, when you come from the subcontinent, when you come from South Asia, you are a representative. A lot of us also live in little ghettos, little groups. So you're from that part of the world, the next door is from that part of the world, next door is from that part of the world. Then all you're doing is coming to a cold country and making money. But there's joys here as well. So I'm not just saying don't just stick with yourselves. It is called an echo chamber. What you need is somewhere where there are good people. I found the local population very, very good because I mix with them, they mix with me, and there is no issue. And remember, it's for your benefit. If you go anywhere, and even in, say, a large country like India or Pakistan or Bangladesh, if you move, you still will have to adjust. Don't go looking just for your own people, within quotation marks. Why do you think we people from South Asia are in the paper more than we should be? Because we do naughty things, we do wrong things, we have a habit of doing them. We have a habit of doing just a little bit of extra. So many of my patients have been in jail. You will. And I'm saying this for your own benefit. Land up in jail, your wife and kids will cry, nobody will want to talk to you, and you might want to just run away. But imagine going back to South Asia and they'll all laugh at you. We saw you in the paper. Remember, everything is exposed now. Everything is on the internet. So do not cheat. That is basically the rule for finance. Do not do wrong things because everything is electronic. Do not break any rules as much as possible. Sometimes we make mistakes and the police are very forgiving. The other day I was in Gateshead and I took a turn and unfortunately the road wasn't very clear to me and I had on-facing traffic. It was night, so there wasn't much traffic. I reversed and went in. I saw a police lady come behind me. I stopped. I took out the keys and handed it over to her and just said, I'm sorry. I admitted to my guilt and she was so nice. She said, are you new here? I said, I'm not new, but I don't know this part of the world, though I live in Newcastle. And she said, fine, go. She had looked at my address and checked. So people are kind here. They are not against us. It's we, South Asians, who are against ourselves. We are bitter towards our own self. We are unkind to ourselves. We are unkind to our families by cheating and getting a name in the paper, and everyone is laughing at us. As I was saying, you make a lot of effort, pay a lot of money, detach yourself from your family, your wife and children, etc. to come here, make new friends and everything. One false move and you'll get deported. And once that is, you'll be hated all over the world. So please, please, please stay within the rules. Thank you.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
Now let me tell you two examples of two of my patients. One was an accountant from the subcontinent, and he got into the habit of gambling. And one day he got money from a patient, another patient of mine, who gave him the money to pay the tax people. He did not. He went and gambled it away. He did not ring the lady and said, "I'm very sorry, I've gambled it away, but I'll make up to you in a month's time." He just didn't file it. When the case came up, he was arrested by the police for evading arrest, and he was in jail, and his name was all over the paper. I felt embarrassed. A different example, a waiter in a restaurant said to me about 12 years ago, he said, "I work in a restaurant and I get £9,000 a year over the table, white money, and I get £5,000 all over the year as black money in my hand, and I'm looking for a mortgage." I said, "But I'm not a doctor, I'm a doctor, I'm not a mortgage advisor. But you cannot get mortgage on black money. You can only spend that on little things, and it's wrong anyway." So all I'm saying is, if you want to maintain your blue passport, it's a blue passport, British now, not red anymore. If you want to maintain that, do not cheat. Do not take shortcuts. Do not take advice from other people from your part of the world, because they've done bad things and succeeded. Many times they do shortcuts, what it is called in Hindi, jugaad, like last minute touches. Maybe I'll talk about jugaad as well on another time, but we are so used to working in the chaos of our subcontinent, which was recently freed, and therefore we are very confused that the systems have not laid down, where democracy is still not running very smoothly. But here it is. We have had 400 years of democracy in Britain. This is where democracy started. So rules run here, and if you stick with the rules, you'll be fine. And if you're in trouble, go and ask a solicitor, go and ask your next door neighbor, go and ask a friend who's not necessarily just like you, trying to find another way out of your trouble. Do it the right way. If there's a fine to pay, pay the fine. If there's an insurance claim, it should be genuine. Don't try to cheat, you'll get caught. So many people I know have had fires in their warehouse. It is wrong. Everyone knows. But you know, the English people are quite polite. They know what it is, they just keep quiet for once. Second time they keep quiet. Third time, that's it. You're either in jail, completely ruining your reputation and my reputation as well. So if you wish to come to the Western countries, I'm not just talking about England, it can be Sweden, it can be Finland, there are lots of our people in these countries, Portugal. Do not commit crimes. There is no need for it. You will spoil your reputation, your families, your friends, people from the subcontinent, and generally you create unhappiness. Avoid the police, avoid lawyers, just stay on the clean, narrow path of true, good citizen as an immigrant. So, in my coming episodes, I will definitely prove to you that you don't need professional help to get a visa. You don't need that. The rules are there, the system is there, and if you're the right person, living the right way, improving all the time. And I keep saying all the time, improve yourself, improve your language, improve your social skills, improve the work you do. Don't just be stuck in one job and just do, and then go and do naughty things to compensate for the misery of it. If you stick with the law, you'll do it. I'll quote some more examples of people, how they cheat, how they do wrong things and get into trouble. Only the other day, I was talking to a fellow and he says, "Doctor, tell me a way of doing this." I said, "Why are you asking me to do things? I just came as a professional. I stayed within the professional boundary. I could not step out of it. I couldn't be selling drugs on the side. I could be, but why would I just damage my whole reputation? My wife would be ashamed of me. My children would be shocked, and whole community would say, what's happened to this man? He talks about it a lot. Look what he's got himself into." Because when you're new and a different color, a different language, a different way of talking, people will notice you because you stick out like a sore thumb. So you are an ambassador of your country. Whichever part of the South Asian subcontinent you come from, you are an ambassador. Remember, you represent every single person of that faith or that part or of that culture. You are not a single entity. You cannot be lost among all the other local population because you are different. So take full advantage. People are very kind in this country. I realize people go the extra mile. I mean, in this country, there are
people who don't learn English, and this country gives them translated paper, translated this, translated that. That is the country being gentle, but you're being stupid. You should be going to a night class and learning English. All right, if you're 80 years old and a grandmother and stay at home, that's fine. But if you are seeking a job, and if you're looking for a job, or if you're on the dole for wrong reasons, and let me tell you, a lot of our people, as a doctor, I'll tell you, make fake promises, and their fake doctor lets them have a certificate. But one day they'll be caught. In China, if an acupuncturist gives you a sick note, it lasts longer than a Western doctor. It's a bit like that. So the doctor's reputation is also going down by false certification. So I strongly urge to you, stick within the rules, do the good thing, do night classes, read, look in YouTube. Don't just look at entertainment, look at edutainment. Look at improving your language, improving your knowledge. Don't just watch some Hindi movie and I'm very, very happy, thank you very much. No, read, learn. There's so much to learn. There's so much ease to learn. You can do night classes. You can do courses online. You can join Open University. There is so much. There are camera clubs. There are artistic clubs. These are the ways of getting into this society. But if you don't want to be integrated, why the hell are you here? And that is the point I'm making. Be happy, be positive, be productive, and this society will love you. I'm a living example of that. I came just as a doctor in the hospital, then I became a general practitioner. Now I'm a politician. I've been on radio. I'm now on you on this wonderful satellite channel, South Asia Global. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक
इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढांप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तालीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा।
आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमल